Director, Srinivas, Honorable Dharmik, and the respected participants. Good morning, Namaskar, Sat Shri Akal, Vanakkam to all of you. I hope my voice is audible to all of you. Yes, sir. Can we request the participants to switch on the webcams for some time? Participant, please on your videos. Because I wish participants should switch on the webcams. I request the participants to kindly switch on the webcams, please. Even though this is an online workshop, I wish there should be an eye-to-eye contact is very much needed. Okay, Preeti, can I mix both Hindi and English? Yes, sir. Yes, Hindi and English. Right. Participants, you can speak or discuss in Hindi if those who are not comfortable in English, but please be interactive. और सर का हमेशा सेशन डिस्कशन मोड में ही होता है, तो you can prefer Hindi language also. Thank you. So thank you very much for UGC HRDC Nagpur University for providing me this opportunity to interact with you all. And the topic which I am going to talk, which I have been speaking for more than 1,000 workshops. And I'll be going to speak for another 1,000 workshops also and coming to 3 years. And many of you must have heard to me and are first time you are hearing to me. The reason why we want to know all these things again and again. जैसे देखिए मैंने आपको कहा था वेबकैम्स ऑन करने के लिए, तो कुछ ही लोगों ने ऑन किया, कुछ लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं. प्रॉब्लम क्या होता है ना, क्योंकि इसके बाद मैं आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में, नैक में आऊंगा. याद रखिए मेरा चैनल. मैं जनरली जिस वर्कशॉप में जाता हूँ ना, मैं हमेशा लोगों से मन्नत मांगता हूँ कि भाई मुझे उस कॉलेज में भेज दिया जाए ताकि मैं एक बार कम से कम देख तो लूं जो हमने जो पढ़ाया कितना कितना कार्यरूप हो रहा है. So what is important is the implementation. What is important is the outcome. Why it is important? Earlier was also very much important. पहले भी हम लोग ये सारे चीज करते थे. अब क्या हो गया? Before I should go for my session, एक छोटा सा डायग्नोसिस कर देंगे. Just assuming that you went to a doctor. डॉक्टर तो सीधा आते ही दवाई नहीं लिखेंगे. Of course, नस पकड़ के देख तो लेंगे. First of all, we'll do the diagnosis part. Then we'll prescribe the drug and how diligently one has to use it. That is more important. And often I'm getting little disturbing trend. मैं इसलिए बार बार ये बात आपको कह रहा हूँ. Recently, I visited one of the university for a NAC, an academic auditing के बारे में, not NAC, ACT related academic audit में. Why it is disturbing? तकरीबन मुझे तो 30 से 35 लोग मिले थे. 30 to 35 people I met there. Everybody is claiming that sir, you taught us. ठीक, very good. अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपका सेशन इतना बच्चे. So I said, okay, what is great in this one? Yes, that's whatever I practice, I preach. But what is disturbing to me, out of these 35 people, just 1% making an attempt to implement taking these ideas to the classroom. बाकी सब लोग कह रहे सर देखिए मेरा आरसी का सर्टिफिकेट, सर देखिए माय एफआईपी का सर्टिफिकेट, सर मैं देखिए दिस इज माय ओपी सर्टिफिकेट, मेरा एपी सर्टिफिकेट. व्हाट डज इट मीन? If you are not implementing anything, if there is no outcome, what is the fun of conducting? You know how much effort is being Dr. Preeti and Professor Dete is conducting behind the screens and contacting the people, ensuring them, and and enabling you to do it and to the best of their ability, calling the people, and so many things are being doing on. Why we are not taking this one? The moment we start saying that लोग कहते हैं सर ये इसकी कमी है, उसकी कमी है, उसकी कमी है, ये भी नहीं चल रहा है, वो भी नहीं चल रहा है. My point is that whatever best of our ability,
these ideas to be reflected in the classroom teaching. Unless and until we don't take this one to the classroom, things will not improve. Abhi log keh rahe, whatever the education policies comes, whatever the number of policies are coming, it is the teacher who is responsible. And don't think that everything is a rosy picture. No. Even for me, I sat in this chair today. It's 11 o'clock. Thanks to Preeti that she gave 11 o'clock session. 8:30 to almost 10:45, I took a class. And from again 11 o'clock to 2:30, a break of half an hour or 50 minutes or 20 minutes, I will be with you. But I'm all these things, I'm feeling it as a privilege to address you. As long as we are not thinking in the direction, things will not happen. Why? Because every teacher wants to make the process of learning impactful, engaging, interesting, and challenging to the learner. I hope you have been writing all these things. ये मेरा वर्कशॉप व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज नहीं रहता है. व्हाट्सएप पे कन्वेइंग फ्यू थिंग्स ओनली. सो एक कॉपी कलम साथ में रखिएगा. इवन तो ये आरसी एंड आईसीटी एप्लीकेशंस इन सॉफ्ट स्किल्स प्रैक्टिकल भी हम आपसे करवा देंगे कई सारे, क्योंकि 2 सेशंस है हमारे पास. बट पहले समझने की कोशिश करेंगे हम करना क्या चाहते हैं. And you know, many of the faculty members, I assume that you are all listening to me because I'll be going to ask the questions, because many of you are not switched on the webcams. Abhi bhi, even after 2 years, we are facing a problem of webcams are not working. And we are facing a difficulty of microphones are not working. Internet is not working, but still we are attending the workshops. That is the greatness of this country. That is the greatness of these faculty members. But how do we take these faculty members along with us? अब आपके लिए भी एक सॉल्यूशन बताता हूं जो मैं डेली टू डे बेसिस पे इंप्लीमेंट करता हूं. ओके, ये क्यों बात इतने करने पड़ी? पहले भी हम करते थे. व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट नाउ इज, अर्लियर जो भी हम पढ़ाते थे, सो इट इज ओनली अमॉन्ग द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम के 4 दीवारों के बीच में ही थे. बराबर. अब क्या हो गया? व्हाटएवर वी हैव बीन टीचिंग, आपके विद्यार्थी के अलावा their parents are also watching, their spouse also watching, their community people, घर के अंदर बाकी लोग हैं, they are also watching us. It's not only the teacher, it's not only the student, because my daughter is pursuing law, my son is pursuing law. When they are taking the classes during holidays, मैं कोने में बैठ के देखता हूँ टीचर कैसे पढ़ा रहा है. Understand carefully. This is good for system also. इसलिए मेरा बेटा कहता है, बेटी भी कहते हैं, पापा आप पीटीएम्स में मत आ करो, क्योंकि कॉलेज में पीटीएम भी होता है, आप डांटते हो हमारे टीचरों को. मैं कहता हूँ बेटा मैं डांटता नहीं हूँ, साल में 2 लाख रुपए पे कर रहा हूँ ना ट्यूशन फी, ये मेरा हक बनता है. मैं ये कह रहा था किस तरीके से पढ़ाना है, हाउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इम्पैक्टफुल, हाउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंजॉयबल, इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव. ये जरूरी है. So what are the things the people like me, people like you are watching? Okay, some of your children may be in school education, some may be in higher education, some may be in postdoc education, graduate education. What are the things we are watching? When the teacher switched on the webcam, what is the first thing we are watching? The teacher's language competency. जैसे मैंने आपके प्रीति से पूछा था ना, मैं हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बोलूं, थोड़ा बहुत तो मराठी भी, इतना तो मराठी में नहीं आता है. मैं प्रीति को कई बार कहता हूँ मुझे मराठी नहीं सिखा रहे अभी तक. इतने सालों से मैं नागपुर वालों से मैं मिलता जुलता हूँ. बट फिर भी मराठी समझ में आता है बराबर, याद रखिएगा. हाँ, थोड़ा बहुत तो मुश्किल. माय पॉइंट इज दैट लेट्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी. अब देखिए, जब मराठी की बात आते है कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई. And my South Indian people are saying that sorry speaking only Hindi, इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ. Let's take the people along. The language is very important. And second important thing is the domain competency. Whatever the subject area,
sciences, social sciences, humanities, engineering, medical, law, whichever subject you are teaching, you must be an expert. Language competency के बाद pedagogical competency. Sorry, first language competency, the domain competency. The third important factor is the pedagogical competency. क्योंकि हमारे क्लासरूम में सारे यूनिकनेस नहीं रहता, जैसे आईआईटीज में, आईएम्स में होते हैं. कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एवरेज लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड लर्नर होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट्स होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, और कुछ तो हर हर टाइप के लोग होते हैं. वो ना सुनते हैं ना सुनाते हैं और हरकत करते रहते हैं, और ऑनलाइन में और ज्यादा हो गए. और अब आप चलो कम से कम यहाँ की बात कर रहे हो कि आई एम आस्किंग पीपल टू स्विच ऑन द वेबकैम, पीपल आर नॉट डूइंग इट, सेइंग दैट सर देयर मे बी अ प्रॉब्लम. बट इन दिल्ली मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर सेइंग द मोमेंट आई से स्विच ऑन द वेबकैम, उनका वेबकैम खराब हो जाता है, इंटरनेट खराब हो जाती है. और अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बेटा कोई बात नहीं. इसलिए मेरे पास भी एक तरीका है. मेरा तरीका क्लासरूम लेक्चर ही नहीं है, याद रखिएगा. और अटेंडेंस कंपलसरी है. प्रीति मैडम ने तो आपको कहा होगा अटेंडेंस कंपलसरी है, एचआरडीसी इसमें कंपलसरी है. कैसे कंपलसरी है? नॉट 85 मिनट्स, 90 मिनट्स, यू हैव टू पार्टिसिपेट. So don't make only lecture method, because when we moved from the conventional classroom teaching to the online mode, what was happened? We started using the synchronous ICT tools like Zoom, Google Meet, WebEx, so on and so forth, to start delivering a lecture. इसमें कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग तो अच्छा खासा अभी जिन्होंने कैमरा बंद करके बैठा है, चाय पी रहे होंगे, 100% चाय पी रहे होंगे. नहीं तो इस टाइम तक तो हाँ गरम गरम नाश्ता भी आ रहे होंगे. यार ठीक है यार, सर तो प्रीति मैडम ने बोला भी था, क्या फर्क पड़ने का, आराम से नाश्ता करने का. वड़ा पाव खा रहे होंगे 100%. मैं कहता हूँ वड़ा पाव खा रहे होंगे. वो कोई गारंटी नहीं है कि क्यों नहीं खा रहे वड़ा पाव. 11:15 बजे का टाइम है, लंच टाइम, आराम से घर पे बैठ के तो पढ़ रहे होंगे. My point is that how do we take the people along with us? I'm just telling all these things on the lighter side so that you all can join me in this part as such. So the language competency, the domain competency, and the pedagogical competency. The fourth important thing is how passionate the teacher is. What is his patience level and how he is pursuing. Passion, patience, and perseverance matters a lot. Matters a lot. जब तक जज्बा नहीं है, पैशन को क्या बोलते हैं? जज्बा बोलते हैं उर्दू में. जज्बा नहीं है पढ़ाने के लिए, अरे सो रो रो के पढ़, अरे क्या रो रो के पढ़ाना है? एवरीबडी कैनॉट बी अ टीचर, अंडरस्टैंड केयरफुली बाय दिस टाइम. एवरीबडी कैनॉट बी अ टीचर. ऊपर वाले का रहम होना चाहिए, तब नहीं तो टीचर नहीं बन सकते आप. यू कैनॉट टीच. टीचिंग इज नॉट पीपीटी रीडिंग. और आजकल तो दिस इज अगेन वन ऑफ द डिस्टर्बिंग थिंग आई एम ऑब्जर्विंग. पावर स्टॉप, पावर पॉइंट स्टॉप, लेक्चर स्टॉप. I fail to understand what is the connectivity between Power and PowerPoint. Fine, it's okay. PowerPoint is a facilitator, especially in online classes. But as a teacher, when I come to this class, there is a screenplay behind my screen. There is a storytelling. There is a connectivity. They are connecting the dots. Without all these things, well, only technology will not work. Please understand carefully. I'm a professor of computer science. I'm telling you, technology is only a facilitator, sir. Technology is only enabler. No technology will work unless a teacher is supreme. Teacher is supreme. Teacher is supreme. Teacher cannot be replaced by technology. Yes, the process of teaching learning definitely will change with the help of this technology. So passion, patience, perseverance is very important. The last point is how effectively teacher understood the respected ecosystem and the components. आप पूछ सकते हो सर ये सारी चीज आपको कैसे पता? मैं पहले एक पेरेंट हूं, उसके बाद एक टीचर. जब मेरे बच्चे क्लासेस पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज देखता हूं. उससे पहले जब मैं क्लासेस पढ़ाता हूं,
मैं ये भी ध्यान में रख के चलता हूं। व्हाट इज दैट इकोसिस्टम? हम पहले क्या थे? 31 मार्च 2020 से पहले कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड टीचर्स, चाक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को चाक बोर्ड तरफ यूज करने वाले, वो सारे ब्ला ब्ला ब्ला। जब लॉकडाउन में कैमरा के सामने हम आ गए, अभी भी एक वर्कशॉप में, चलो शुक्र है कम से कम प्रीति की वजह से या डॉक्टर देते की वजह से 1 2 3 4 5 लोग कैमरा ऑन किया 20 में से। ऐसे ऐसे वर्कशॉप्स में करता हूँ, सुबह से लेके 9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक एक भी पार्टिसिपेंट कैमरा ऑन नहीं करता। कैमरा बंद, माइक्रोफोन बंद। I don't know why should we teach such kind of workshops. I fail to understand. So it should be two-way communication. So when we come in front of the camera, initially we were not comfortable. And उसमें हुआ क्या है? कैमरा के सामने आते, कैमरा के सामने कैसे पढ़ाना है, कैसे हमारे लोगों को साथ में लेके चलना है, इसके लिए कोई रिटन रूल नहीं था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं हुआ है, बट अचानक आ गए कैमरा के सामने। तो 10-12 सालों से मेरे जैसे बंदे जो प्रचार कर रहे थे इस सारी चीजों को, ये हमारे कोरोना ने तो एक महीने के अंदर अंदर इसको लेके आ गए। चलो लोगों ने अपना लिया। अपनाने के मतलब क्या है? अंडरस्टैंड केयरफुली। जस्ट रिप्लेसिंग द फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वेबएक्स मीटिंग इज नॉट द क्लास। क्योंकि क्लास से पहले भी वी हैड टू डू समथिंग, वी हैव बीन डूइंग, और क्लास के बाद भी, और स्टूडेंट्स भी इस तरीके से। सो इसी चीज को, दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, द अंडरस्टैंडिंग द इकोसिस्टम। सर कितने इकोसिस्टम्स है इस तरीके से? नंबर 1, ये ऑनलाइन टीचिंग एक इकोसिस्टम। ऑनलाइन टीचिंग मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट lecturing in front of camera using a standard synchronous learning platforms. सर ये काफी है क्या? नहीं, दिस इज नॉट इनफ। क्योंकि सिंपल लेक्चर देने से कुछ लोग पकड़ेंगे, कुछ लोग नहीं पकड़ पाते हैं। वो हार्डवेयर के कारण हो सकता है, सॉफ्टवेयर का कारण हो सकता है, उनके साथ अरे कई सारे चीजें, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट में तो इंटरनेट मिले ना मिले। अभी मान लीजिए प्रीति मैडम से कोई बात कर रहा था, उसको कट 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 करे बातचीत आ रही। इट हैपेंस, नेटवर्क इज नॉट यूनिक एवरीवेयर। एंड मेरे आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे, आपके आवाज तो मेरे पास तो अभी तक पहुंचा नहीं, शायद पहुंचेंगे आगे। मैडम ने तो कहा था इंटरेक्टिव बना लो, ठीक है, आगे के सवाल पूछूंगा ना आप लोगों से। सो दिस इज द वन इकोसिस्टम। सो क्या करना है, वेबएक्स क्या होता है, वेबएक्स में कैसे पढ़ाना है, दिस इज वन वे। सो अनलेस एंड until you understand the ecosystem, understand the components, understand the processes theoretically and practically, you cannot deliver, your delivery cannot be the quality. अब अच्छा, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये पिछले 2 सालों में विद्यार्थियों के साथ साथ माँ बाप की अवेयरनेस इतना हो गए, पूछो मत। इवन उसमें हम भी है, आप भी है। Every parent is saying, no, 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 I think this sir is teaching something, we should do something better. What is the better? See, it has been reached to many levels. They want the quality teaching, quality assessment, quality interaction, so much in quality, quality, quality. Quality ek din mein aata hai? It cannot come in one day. So we have to strive for the best. Understand carefully. The first ecosystem is the face-to-face interaction, which we have been doing. And the second ecosystem we started adopting by force is the online lecturing method. But the online lecturing is not enough, because online lecturing only talking about the synchronous mode of interaction. We need to have an environment which is also going to support the students before the classroom attending the class or after completing the class also. क्लास से पहले भी हम कुछ उनसे करवाना चाहते हैं, क्लास के बाद भी हम उसको करवाना चाहते हैं।
So connecting both synchronous and asynchronous environment, I should call it as online and offline environment, is another ecosystem. इसी को blended कहा जा रहा है. So एक तो अब कितना इकोसिस्टम्स मैंने बताया, कितना इकोसिस्टम्स मैंने बताया अभी? एक लेक्चर प्रो ऑनलाइन Two. वीडियोस webcams and Three. Exactly, three I said. First one is conventional classroom based teaching. Second one is lecturing using the synchronous learning platforms. And तीसरा जो है mixing the synchronous plus asynchronous, which is blending. Fourth one, भारत सरकार ने 6 से 7 साल पहले MOOCs नाम के एक इकोसिस्टम को लेके आया. Massive open online courses. Massive open online, that's again another ecosystem. And their components are different. The process is different. The protocols are different. So in चारों चीजों में what is common? Common is teacher, common is student, common is content, but the pedagogical approaches are different. So हमें क्या इन सारे चीजों को adopt करने के लिए where should we start? First of all, we should be a domain expert. Then we should have the pedagogical expertise. We should have technological expertise, technological, pedagogical, content knowledge. This is required. And very, very importantly, positive frame of mind. कई बार लोग कहते हैं अरे सर बोरियत हो रहा है. I don't know. ऑनलाइन में इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कभी बोरियत महसूस ही नहीं किया था. I don't know why the people are calling it bored. सुबह वड़ा पाव खाते हैं, कभी बोरिंग महसूस कर रहे हैं क्या हम लोग? कमाल है. आप वड़ा पाव खाते हैं, हम भी आजकल तो दिल्ली में वड़ा पाव ही खा रहे हैं. पोहा पहले तो नहीं मिलता था दिल्ली में, आजकल तो पोहा बन रहा है. और हमारे बच्चों की वजह से तो ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब कुछ बन रहा है हमारे घर में, सोमवार से लेके शनिवार तक. हमें कभी बोरिंग है ऐसा कुछ चीज नहीं. इट ऑल बिकॉज वी हैव नॉट एंजॉइंग द सिस्टम. टू एंजॉय इट. एक बात बता रहा हूं मैं आपको, द मोमेंट यू स्टार्ट एंजॉइंग, द आउटकम इज वेरी हेल्पफुल. मेरे पिताजी बचपन में एक बात कहते थे, as long as you are enjoying the job, the salary, you feel it as a salary is the incentive for you. जिस दिन आप एंजॉयमेंट खत्म करोगे, ठीक है, रोते क्लास में आ जाना, रोते बोलना, पूरा दिन ही ऐसे रहे. Just be enjoy. Yes, I got a chance to teach, I got a chance to associate, let's do it. Okay, so now these four important things, इनमें से one of the interesting and important thing which is required at this current time is the blended mode of teaching. Because the point is, अभी तक बहुत हो गया, and अभी लोग कह रहे हैं कि fourth wave है, और even whether the wave or no wave, we should make the process of learning impactful, engaging, interesting and challenging to the learner. अब सवाल ये है, how do we make the process of learning impactful? मतलब only lecture देने से हो जाएगा? नहीं, लेक्चर के साथ कुछ और चाहिए, क्योंकि हम स्लो लर्नर को भी हमारे साथ लेंगे, मीडियम लर्नर को भी हमारे साथ लेंगे, टॉप लर्नर है, क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं कि उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, मतलब से वो पिकअप कर लेता है, उनको ले लेंगे. और साथ में वो आपस में सीखने के लिए भी एक ऐसे माहौल बनाएंगे. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, यू नो, when the learning happens, अब आजकल तो एक और सबसे बड़ा 2 साल में क्या हो गया, मोबाइल का आदत लोगों को बढ़ गई. ठीक है, वो टीचर्स में बढ़ गए, पेरेंट्स में भी बढ़ गए, बच्चों में भी बढ़ गए. ठीक है, मैं उसके अंदर फ्लिप साइड्स की बात मैं नहीं करना चाहता, बिकॉज इश्यूज आर देयर, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट एज ए लर्नर, if I can get something on a click of the button, हर लर्नर के 3 टाइप की पेसिंग होते हैं. हर लर्नर के, वो अपने पेस में पढ़ना चाहते हैं, अपने पेस में, PAC पेस. दूसरा, अपने स्पेस में पढ़ना चाहते हैं.
Now I'm going to ask you the question difference between what is pace and space. And third one, अपना time से पढ़ना चाहता है. So pace क्या होता है? From where we are. Yes. And इसको इसको तो simple term में कहते हैं रफ्तार. अपने अपने pace में. Everyone is not Pace the is same. speed with which we can move. Exactly. I don't know who's spoken this. Pallavi, Dr. Pallavi Jagiri, I think so. Yeah. Good man. Thank you. Second one is space. Everyone's space is different at home. Like my daughter studies till up to 2 o'clock in the early morning. She gets up little late in the day. But whereas my son sleeps in the night and gets up around 3:30 in the morning. Both of them are enjoying their own space. So last one is time. Everyone's time is different. So why don't we facilitate this kind of things to the students? Then the learning can happen like this. That is the need of the hour. ये कौन करेगा? टीचर. इसके मतलब सर क्लासरूम में लैपटॉप होना चाहिए. नहीं कुछ नहीं है. मैं क्लासरूम में लैपटॉप मना करता हूँ, मोबाइल मना करता हूँ. Whatever should happen वो क्लास से पहले हो जाए या क्लास के बाहर हो जाए. So to do all these things, we require a trained teacher. We require a trained teacher. We required a passionate teacher. We required a teacher with a lot of patience and perseverance. We required teacher with good subject expertise. That is the need of the hour. एंड ये मत सोचना कि ये सिर्फ इस वर्कशॉप के लिए कई लोग कहते हैं सर कोरोना के बाद क्या होगा. कोरोना के बाद ऐसा ही चलेंगे. So with this background, friends, I'll be starting my presentation as I already told you before that. And there is a protocol which I follow, and that protocol I will be explaining to you, and as and when we move on. Okay. And kindly confirm to me my PowerPoint is visible to you all. Yeah, yes, sir. Okay. So this is the title of my presentation. So we had to build the competencies of the teachers. मैंने आपको जैसे ही बताया था, ये मेरा almost 1200 or 1250 session है on the same topic. Same topic. Okay. So what are those competencies we need to build? These competencies are required for the blended teaching learning. These competencies are required for the online teaching. These competencies are required for the MOOCs, course development, and so on and so forth. And it should be a step-by-step practical approach. It is a step-by-step practical approach. So some of the steps I will try to cover. Hopefully during this workshop, the other things will be covered by the other resource persons also. Okay. So let's start with the first important quote by the Albert Einstein. What Albert Einstein has said, he said, I do not teach anyone. I only provide the environment in which they can learn. So पढ़ाने के लिए माहौल बनाना बहुत बहुत जरूरी है. And before you create the environment, you should convince yourself. One important point, please keep in mind. If you could not convince yourself, you cannot convince others. And many times, half-cooked meal, अरे ये हो सकता है, हो जाएगा. I'll show you that how it will happen. They're all zero costing, excellent solutions are there. But technology is only secondary to me, not the primary one. Second important point, very, very important, which we all of us need to understand, is about the attitude. Many times what we think that aptitude is enough. I said, no. If the attitude is missing, and nothing is going to happen. You see what Kalam Sahib has said. Many times we afraid of failures. हम फेलिंग के लिए डरते हैं. अरे यार ये फेल हो जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, लोग हंसेंगे. अरे हंसने तो ना. अरे जीत से क्या पता चलेगा, हार के देखो हम अपने पीछे कितने लोग हैं. You see what he said? Fail का मतलब क्या कहा था इन्होंने?
Can anybody read for a minute what is the three important things on the screen? First attempt in learning. Fail and no. I'm asking you to completely read out, sir. Okay. If you fail, never give up because fail means first attempt in learning. End is not the end. If fact end means effort never dies. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. So let's be positive. Thank you, Kadir sir. Okay, thank you. So, इसमें देखिए the three important things. One is about the fail, and as per the Kalam Saab, it's a first attempt in learning. So when you are learning the new techniques, new technological developments, many new things. So often right click, left click, upload karo, download karo, ye format banao, wo format banao. So many things will be saying. So never afraid of doing all these things because fail is the first attempt in learning. सेकेंड वन एंड मेनी टाइम्स पता नहीं आप लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, खासकर दिल्ली में तो ये बात कहा जाता है, अरे भैया हमारे मेहनत गई भाड़ में। ये अक्सर ये बात कहा जाता है, मेहनत का भी भाड़ में, इट्स ओनली योर परसेप्शन एंड वी आर सेइंग दैट नो 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 पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड। अरे अंडरस्टैंड सारे नहीं कर पाएंगे, जस्ट 1% ऑफ द पीपल विल अंडरस्टूड, he or she will make the change. So you should do your karma, you do your work as a teacher, as a facilitator, you do your best. So effort means E and the end means effort never dies. The last point is whenever we try to facilitate, generally the mind says no. So what Kalam Sahib has said, so aptitude next Unum is next opportunity. And being a teacher at this current scenario is not so easy. I think you must have realized by this time, during this pandemic time. So a lot of things are required to be done as a teacher. So my request to all of you is, so whatever best it is possible, try to do it. Don't compare yourself. We are not a second-rated citizens. No, we did our best as a teacher. And often we used to say, अरे सर यूएस में ऐसा होता है, यूके में ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज में ऐसा, अरे हमारे पास भी होता है. I know wonderful teachers are teaching in the classes. But again, sometimes what happened nowadays, the expectations were so high. जो भी हम पढ़ा रहे हैं लोगों को मीट नहीं कर पा रहे, उसी चीजों को कैसे समेटना इस वाले सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं. So what is the primary objective? The primary objective is to make the process of learning impactful, engaging, interesting, and challenging for the learner. So the question in this case is, how do you make the process of learning impactful? How do you make the process of learning engaging? How do you make the process of learning interesting? And how do you make the process of learning challenging for the learner? यही चीज हमें सीखना है. And what are the best and what is the best way? What technology is going to be used in this regard? This is what we need to understand as such. Let's understand the 21st century classroom. All these things, they're part of the 21st century classrooms. So few important points I just want to highlight here. 21वीं शताब्दी की क्लासरूम में इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एट प्रीमियम. पहले होते थे नहीं नहीं मेरा डेटा नहीं है, ये मेरा डेटा है, ये मेरे पास ही रहेगा और किसी को नहीं पता होता है, फलाना फलाना ढमकाना ऐसा कुछ चीज. नाउ ऑल दिस थिंग्स आर नोवेयर देयर. Okay, you inform thanks to World Wide Web. This is the first important point. The second point is that and World Wide Web में क्या क्या चीज आपको मिल रहा है? You are getting the core resources, you are getting the supplementary resources, you are getting a lot of softwares, you are getting a lot of video material, you are getting a lot of simulation material, you are getting a lot of demonstration. So many things are available. So it's not enough for a teacher to only transmit the information in the classroom. ये समझने की कोशिश कर लीजिएगा. ओके, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, कई बार हम लोग ये भी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं हम इतना बढ़िया वीडियो बनाते हैं, वो उससे compete करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब से, यूट्यूब से, इंटरनेट से. नो, इट कैन नॉट पॉसिबल. सो
what is important need to understand, point number 3, it is necessary for a teacher to ensure that students are able to assimilate the information through appropriate and timely practices. This is important to me. So how the teacher is going to ensure the students to assimilate the information? यही पूरा खेल है, इस पूरा वर्कशॉप का खेल यही है. How do the students assimilate the information, teacher? Okay, and what are the appropriate and timely practices? And how can the teacher, no, आपको समझ में तो आ गए होंगे, and how the teacher is going to change the role as a facilitator, as a guide, as an enabler, as a co-learner. इसमें हमें क्या क्या चीज करना है, कैसे कैसे करना, and teachers can have an even more profound influence and effect on student learning. It's now become more learner centric and customized. पहले हमारे अप्रोच क्या था फेस टू फेस क्लासरूम में, टीचर सेंट्रिक था, and 99% of the things students are learning through the teacher only. मैं कहता हूँ वो गलत नहीं है, सही है, but now बदलते हालातों को देख के let's make it as a learner centric, so the teacher will create an environment so that learner can learn. Okay, in this process, there are 3 important things I wish you should need to understand. I just want to name Dr. Kiran Ajay Wankhade. Dr. Kiran Ajay Wankhade. Yes, sir. मैडम एक बार पढ़ लीजिएगा स्क्रीन में. Education, especially at the post-schooling level, skill-based, only knowledge-oriented. मैडम थोड़ा सा जोर से पढ़िएगा, हम लोग सुन रहे हैं. Okay, sir. Okay, sir. Education, especially at the post-schooling level, should be skill-based, not only knowledge-oriented. Tell me, I will forget. Show me, I may remember. Involve me, I will understand. थैंक यू मैम. Okay. फ्रेंड्स, अभी 2:30 बजे तक मैं यही अप्रोच कर दूंगा. मैं किसी का नाम लेता हूं and I request you to kindly switch on your microphone or webcam. Please read. This is important. So what is the need of this? So how the effect can be changed? So especially in the post schooling level, knowledge तो देते ही देते हैं, but it should be skill also. So what are the 3 important things? जब हम lecture देते हैं, I may forget. लेक्चर के साथ साथ कई बार रिसोर्स पर्संस क्या करते हैं, कुछ टूल्स दिखाते हैं. हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में तो आता है. तो इफेक्ट कब पड़ता है? इफेक्ट जब आपको हम एक एक्टिविटी देंगे, उस एक्टिविटी को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, करके आउटपुट्स टीचर को देंगे, तभी उसको अंडरस्टैंडिंग का लेवल ज्यादातर होता है. इसलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सजेशन आई जस्ट वांट टू मेक इट हियर इज यू मेक योर क्लास विथ 4 quadrants. मैं हमेशा करता हूं मेरे क्लास को. What are the 4 quadrants of my class? I have lecture, discussion, demonstration, and hands-on activity. एक second. Let me stop sharing my screen now. I just take a minute to make some small corrections here. This is interesting thing I just want you should understand. Okay, so you should have 4 important components. Probably यहाँ मैंने नहीं लिखा है. Okay, कोई बात. So it's a lecture component, discussion component, demonstration component, and hands-on component. आपके जो 1 घंटे के क्लास हो, so the question comes, sir lecture component तो ठीक है, हम समझ तो रहे. What is the discussion component and what is the demonstration component? आप लोग उसको सोच रहे होंगे कि what is this discussion and demonstration? Discussion means, so discussion cannot happen straight away without explaining anything. तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं वो बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, so that you can understand the things
well here. The first point is 72 hours before the start of the class, 72 घंटे से पहले जो जिस टॉपिक के लिए मैं अगले 2 हफ्ते बोलूंगा उसका रीडिंग मटेरियल स्टूडेंट्स तक मैं पहले ही पहुंचा देता हूं. And I expect that my students should go through that material and before coming to my class. This is very, very important point I just say. So when I come to the class and अच्छा वो reading material में क्या क्या चीज होता है? It's not only reading material. First of all, what is the next 2 weeks का? What are the objectives? What are the expected learning outcomes? I will make it clear to my students. Number 1. Number 2, in this process, what is student का क्या रोल रहेगा और टीचर का क्या रोल रहेगा, कंटेंट का क्या रोल रहेगा और सीखना किस तरीके से, ये पहले ही बताता हूं मैं. ओके. नंबर 3, उसके बाद रीडिंग मटेरियल उनको दिया जाएगा. वो वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज टाइप का मटेरियल हो सकता है. पहले ये मटेरियल स्टूडेंट्स को दिया जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. कहीं भी कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं पूछूंगा सवाल आप लोगों से. सो वंस दे कम टू माय क्लास, इस तरीके के तैयारी के साथ मैं क्लास में आता हूं. क्योंकि हमेशा क्या प्रॉब्लम चल रही हमारे सिस्टम में, इट इज द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली वी टॉक. आई सेड नो, whatever the way I am responsible, my students are also equally responsible. This is very, very clear to them. Okay, क्योंकि whatever they way, it's not only my responsibility unless and until they come across. So इसलिए उनको क्लास से पहले भी दिया जाएगा. लर्निंग प्रॉब्लम, रिसोर्सेस, लर्निंग इकोसिस्टम, लर्निंग कंपोनेंट्स विल भी दिया जाएगा. When they come to my class, पहले आधे घंटे में डिस्कशन में स्पेंड करता हूं. कैसे? आपको 72 घंटे पहले जो आइटम आपको दिया गया उसको आपको क्या समझ में आ गई, कहां तक समझ में आ गई. सो बेसिकली क्लास के बाहर वाले कंपोनेंट को मैं क्या कहता हूं? गाइडेड सेल्फ स्टडी. इवन दो वी टॉक अबाउट द सेल्फ स्टडी मोड, बट आई सेड इट्स अ गाइडेड सेल्फ स्टडी. When they come to my class, so class के बाहर they have an environment, they could read, they could clear the doubts where I am very much available there in the groups, and I'll try to them to understand the basics. अच्छा, यहाँ एक और important बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करना चाहता हूँ. The point is that when the student is okay, leave about the student. When I'm introducing any concept, हम सब लोग यही काम करते हैं. पहले बेसिक्स पढ़ाते हैं. जब बेसिक्स समझ में आने के बाद हम जाते हैं एडवांस कंपोनेंट में. एडवांस वाली कंपोनेंट समझ में आने के बाद देन एप्लीकेशन लेवल पे जाते हैं. तो मैं क्या करता हूं, ये मैं भी यही करता हूं, बट ओनली वन डिफरेंस इज बिफोर आई स्पीक टू माय स्टूडेंट फेस टू फेस, क्योंकि सिंस आई एम टीचिंग इन ए 21st century classroom, आई ट्राई टू यूज द टेक्नोलॉजी and technology weakness of the student to make my system work. Students के लिए, teacher के लिए, one common factor weakness is the technology. Let's try to use the technology to make the things work for you. ये सारे चीज करने के लिए one of the important thing is adapting the change. मतलब बदलते हुए हालात को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत जरूरी है. जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम ऑब्सोलीट हो जाएंगे. क्योंकि स्टूडेंट आजकल तो हमारे लिए सब द बेस्ट है. एंड डोंट पुट देम इनटू स्टैम्प्स. सर ये तो गांव का विद्यार्थी है, ये शहर की विद्यार्थी है. नो, एवरीबॉडी इज ए जेम. एवरी टीचर इज ए जेम नाउअडेज, आई मस्ट टेल यू. बट ओनली थिंग इज they need the proper orientation.
they need the proper sensitization, they need the support. जब ओरिएंटेशन, सेंसिटाइजेशन, सपोर्ट मिलता है, कभी भी आप टीचर से पूछ सकते हो, then naturally teachers also going their best, right? Okay. So what is the technological part? Technology इसमें कहां तक यूज होगा? So only there are so many things out there, but one point I just want to say: technology is not a miraculous cure for all educational ailments. Understand carefully. टेक्नोलॉजी की वजह से तो कई बार हम सोचते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. टेक्नोलॉजी तो एनेबलर है, but it's not a miraculous cure. The effectiveness of the technology directly comes to three things: competency building, attitude, as well as the intent. Okay. Now let's do a small practical exercise. Small practical exercise. The exercise is, मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं. Can you please confirm to me my voice is reaching to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So यहाँ देखिए, in this site there is one website. Let me open that. Let me see issues. No, it's opening. So I request all of you kindly open the site profksrinivas.in. Okay, and go through this site. Next 5 minutes I don't speak anything. मेरे घड़ी में क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, 11:46, 11:46 हुआ है. 5 minutes I am giving a break. Please go through this site and try to click on the link. At least one link है, सबसे ऊपर वाला लिंक ओपन कर लीजिएगा. इसमें देख लीजिएगा क्या क्या चीज ऊपर से नीचे तक है, और इसी के ऊपर अब दिस इज माय फर्स्ट एक्टिविटी टू ऑल ऑफ यू. उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा आगे आगे. ओके, प्लीज स्टार्ट डूइंग इट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. And those of you who completed the watching the site, say yes in the chat box. But before that completely देखने के बाद ही yes लिखना है. पूरी वेबसाइट को देखना है ना, सिर्फ टॉपिक्स? उसमें से एक टॉपिक, पूरे वेबसाइट को मुआयना कर लीजिएगा. इसके अंदर कुछ पार्टी में आपसे पूछने वाला हूँ. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, वहाँ कह रहे हैं कि दिस साइड कांट बी रीच, ऐसे ही आ रहा है. नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है. अब तो मैं बता तो रहा हूँ, ये तो चल रहा है. सर वो मैडम एड्रेस बराबर ऐड करिए. इट इज वर्किंग. एक बार करके देख लीजिएगा मैडम. इट्स वर्किंग. ओके ओके सर, आई विल ट्राई.
Make it fast, please. Sorry? मैडम कुछ आप कह रहे तो, क्योंकि हाँ आपका आवाज बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ एक बार झांकने के लिए कहा था मैंने, पूरा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा बाद में, तो अभी ऑलरेडी तो दे रखा है। चलिए आप चाहे तो और 5 मिनट ले लीजिएगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है। Okay, I think you are all watch it. सर आपकी स्क्रीन एक बार शेयर कीजिए ना। Yes, sir. Yes. मैंने नहीं किया क्या? Sir, it is shared. It is already shared, sir. Yeah, yes, yes. Badri Yes, साहब sir. already shared It है। is visible, sir. It is visible. हाँ हाँ एक बार देख लीजिएगा। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है और कुछ साइट्स व्यू की है, प्लीज यस टाइप करिए चैट बॉक्स में। यस मैम किया है। जी Okay. जी। चलिए। Yes, ma'am. Okay. Yes. तो आप लोगों ने किया है, तो let me start यस सर। going back. यस सर तो किया है। ओके, बिफोर अभी इसको आपसे सवाल पूछने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड एक बार बताता हूँ। ये जो आप लोगों को जो दिख रहा है ना, ये मैं यूज कर, ये दिस इज माय लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दिस टेक्निक आई एम यूजिंग टू सपोर्ट माय स्टूडेंट्स लर्निंग बिफोर द क्लास and even after the class also. ये बात पहले नोट कर दिया जाए। ये जो प्लेटफॉर्म आपको जो दिख रहा है, ओके, and this platform whatever you could able to see on the screen is a platform which I am using for my students learning क्लास से पहले और क्लास के बाद। This is पहला important thing to be understood. Okay, number one. अब मेरा पहला सवाल जो है, जब आपने इस साइट को ओपन किया, आप लोगों से एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड वाज आस्क्ड? से No, यस sir. और नो? No, sir. No, sir. बिल्कुल। सो मींस इस पर्टिकुलर साइट में I want every one of you, because I have not heard some of the participants, like let me read out some of the names of the people. Dr. Manjari Pathak, Sapna Rani Ramtek, Sumati PV Kerala, Sumati PV. Sir, Sumit PV, I am here, sir. Sorry, No sorry, problem. Sumit. Sorry, not Sumati. I'm sorry. Yeah. Sumit, but I have not heard you anything. That's what I'm asking. Sir, I am using the chat box. Okay, great. Chaganlal, Dr. Chaganlal. Yeah, and of course, Dr. Puttewar is there, and Dr. Girish, Vilas, Dr. Vilas. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And Linta Juke. Yes, sir. I'm so I want, because I have not heard anything from you, इसलिए मैं
Professor Kanchan? Okay. I want Yes, every sir, one yes, of you should, I want every one of you should respond. Okay. This is what I've been saying. So please don't. Okay. So first question आप लोगों ने मुझे कहा था कि sir when I opened this one no password was asked. Okay. Second thing, you must have accessed the link. I think first link आपने access किया. What are your observations about when you click on that link? Sir, it directly open the information Google regarding Drive is that. directly open, sir. Google Drive is directly Yeah. open. We can see Sir, the all content which you have uploaded on the drive, sir. Great. Wonderful, Qadri Saab. Wonderful. So Oh, that thank you. means, what that means, whatever information I wish to share with my students, I put in the drive, okay, Google Drive. उसके बाद उसको ये वाले लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मुझे जोड़ना था. तो दैट मीन्स आप देखते रहिए एक चीज मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ ताकि हमें ये पता होना चाहिए. कंचन आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा. कंचन भोयार आप म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. तो यहाँ क्या हुआ सो दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए हाउ टू ड्राइव में ड्राइव क्या होता है. ड्राइव के अंदर अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग कह रहे ड्राइव में हमने डाला. ड्राइव के अंदर जो डेटा है किस टाइप के परमिशंस मैंने दिया होगा. व्हाट टाइप ऑफ sir, परमिशंस. access by everyone. Access by everyone. Exactly. Very good. Sharing Access model. by everyone so that people can view it, people can download it also, but they cannot edit it or they cannot comment on that. So Google Drive का ये सबसे important component सारे टीचर्स को हैंड्स ऑन में आना चाहिए. ओके. माय थर्ड क्वेश्चन इज इस पर्टिकुलर साइट के अंदर जो आपको दिख रहा है उसके अंदर कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है एंड व्हाट आर दे. Sir, one is YouTube. Hello. हाँ बोलिए मैडम Sir, रेवती बोलिए. one is YouTube. Twitter also. ट्विटर. Second, Creative Commons. So Creative Commons cannot be social media. एक तो Google YouTube है. Classroom. Google Classroom Google social media. Classroom. Google Facebook Meet is. है ना? No, it is not the नहीं है. social media. No, it's not the social media. Facebook, Twitter. Facebook and Twitter. फेसबुक भी है, Twitter, यूट्यूब. YouTube. Yes, sir, I already told you. ट्विटर है सर. ट्विटर और Twitter यूट्यूब तो मैंने कॉमनली दिख रहा है. हाँ मतलब तीनों समेट के बोलना है ना मैडम. एक बोलने से तो नहीं चलेगा, तीनों बोलेगा. Okay, sir. Okay. अब देखिए एक तो यूट्यूब आप लोगों ने बोला, दूसरा Google ट्विटर Meet, बोला. Google. नहीं गूगल मीट सोशल मीडिया नहीं है. सोशल मीडिया Right, में वो नहीं आएगा. इट इज ओनली सिंक्रोनस लर्निंग प्लेटफॉर्म है. तो तीन है, चार है टोटल में. अभी आपको तो पता है, एक तो इंस्टाग्राम है, एक तो ट्विटर है, एक तो फेसबुक है, एक तो यूट्यूब है. ओके. सो ये मतलब व्हाई आई हैव बीन आस्किंग इंस्टेड ऑफ हम ये इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग के. वो सारे चीज जो है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएगा. मेरा कहने का मतलब इसके साथ ये था, so that whatever platform you want to use it, that can be used comfortably in this purpose as such. This is one of the important things should be understood. Okay. Now the last point is, how many of you noticed there is a login button? And वो है कहाँ? Upper, sir, upper right. Upper right. Okay. There is mention you are not login. Here is also that login in okay. bracket. That is a login. Okay. That means इस particular site में there are two types of logins are allowed. एक बिना लॉगिन का दिख रहा है, दूसरा लॉगिन करने के बाद ही दिखेगा. Yes, sir. What is the difference between these two things? क्यों ऐसा So क्यों?
One is for public and one is for private, sir. If you have the access Absolutely. login. One That is is for public, one is for private. For example, you look at my learners. मैं दो टाइप की लर्नर्स को डील करता हूँ. एक आप जैसे जो टीचिंग फैकल्टी है, उसके लिए तो 3 घंटा पढ़ाता हूँ. उस 3 घंटे में ये वाले टूल के ये वाले स्क्रीनशॉट आपको देता हूँ. इसमें क्या है कि यू कैन एबल टू एक्सेस मेनी सच मटेरियल. मैं आपको असेसमेंट नहीं कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड केयरफुली. आई एम नॉट असेसिंग यू एनीथिंग. ये एक काम है. तो इसलिए मैं आपको लॉग इन पासवर्ड वाली झंझट में रखना नहीं चाहता. सो आई एम अलाउइंग यू एज ए गेस्ट इनटू द सिस्टम. अभी देखिए मैंने आपको क्या कहा था. गेस्ट, एक्सेस, नो पासवर्ड, blah 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 and all. This is first part. Secondly, मेरा स्टूडेंट्स भी है इस सिस्टम में. एंड मेरा स्टूडेंट्स क्या करेंगे. My students are going to access this site. और आप में मेरे स्टूडेंट्स में क्या फर्क है. आपका तो मैं ट्रेनिंग देता हूं, उनके लिए मैं टीचिंग करता हूं. ज्यादातर ये तो ट्रेनिंग प्रोग्राम. ओके. बट मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ 6 महीने तक रहेंगे. उनके लिए हफ्ते में 2 दिन क्लास रहेगा. बाकी 5 दिन हफ्ते में ये इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से they will be learning. So for them, I'll be using this login button. So हर स्टूडेंट के लिए एक लॉगिन दिया जाएगा, हर स्टूडेंट के लिए एक पासवर्ड दिया जाएगा. And whatever activities, whatever assessments, whatever the resources I am going to give, all these things will be there. And the advantage is I could able to monitor my students' progress without any difficulty as such. मैं क्यों ये इतने विस्तार से बता रहा हूँ. Because technology enabled teaching learning process is not an isolated activity. It is a planned activity. So without understanding of the planning and development, you cannot. Now I am coming to the 6th essential. पहले इसको एक बार लिख लीजिएगा. Then afterwards, I'll ask one of the participants to kindly read out this. After writing this, I want one of the participants, I'll take the name of one of the participants and kindly read out this one. After writing, Sumit, you have to read this. Okay, sir. Can you, after writing this, kindly read out. Huh? Yeah, okay. Yeah. Okay, Sumit, have you written down? Yeah, yes, sir. Can you read, please? The 6 essentials to be acquired by teacher. Common for blended learning courses, MOOC courses, open and distance learning programs, online programs. Strategies for course planning and designing, selecting appropriate pedagogy, content development, create and using existing, selecting the delivery platforms, synchronous, asynchronous, post transaction, activities, assessments and interaction. Thank you, Sumit. Thank you very much. To prepare that kind of an environment, अभी आपको मैंने पीछे जो दिखा दिया था, and there are certain things every teacher has to acquire. First of all, and the essentials, whatever this is meant for the planning, the strategies.
And these strategies are common for the blended learning courses. Blended learning consisting of online component and an offline component. Okay. And of course, MOOCs courses consisting of only online component. There is no offline component. And open and distant learning programs and offering in online mode. So what are the strategies? So there are totally 6 important strategies are there. The first one is course planning and designing. Okay, so how do you plan the course? How many weeks of the course? What are the objectives? What are the expected outcomes? What you have to achieve? And what about the content? How do we need to design it? What pedagogy is going to be appropriately going to be used? Okay, and how much percentage of content need to be developed? Uh, you know, if there is an existing content that has to be used. Next comes what are the delivery platforms? Synchronous and asynchronous. Synchronous is a live. Okay, face-to-face classroom is live. This WebEx is live, and asynchronous means beyond the classroom. So offline mode also. This Moodle, Google Classroom, Canvas, all these things are part of that. Then very importantly, the planning for the course transaction. How do we transact the course? See, first week, this has to be completed. This reading material has to be done. And you have to submit the assessments. When it comes to the blended classes, you have online and offline, no problem. If it is a books class or online course, the strategy will be different. So we need to understand the transaction. Then comes the what type of activities can be planned. The learning always should be joyful, whether it's a school education or higher education. The moment you stop joyful learning, things will not work. Then what are the assessments can be planned? And very importantly, the interaction means the motivation, the engagement, the encouragement of the learner. Okay, so these aspects somebody has to understand before moving into this kind of things. Okay, so the 6 essential elements are important to be understood. So anything, because now the point is, I think earlier we may be doing in a more haphazard manner, but what is important is let's try to understand these points in a step-by-step manner. So to understand these things in a step-by-step manner, so what is the background behind this? This is the background. You can see this table, which is consisting of 2 important columns. One is about the centralized learning, which we are all comfortably doing for so many years. What is the learner? How do we bring this is one of the aspect of learner centric. So here actually we should create an environment in such a way that learning happens, learner will be there in the center, and learning happens from several sides. It may be from classroom, self-paced courses, webcasting, public internet, virtual classes, and so on and so forth. So I think this is how we need to do the needful. This is very important. One has to understand. Okay. Now, to ensure these things, one of the important point which is helpful is the pedagogy. Pedagogy is basically a methodology of teaching. So there are several approaches are there. Okay. And a few approaches we'll be talking about. One of the important approach which we may be using it very comfortably is the flipped classroom approach. In the flipped classroom approach, what is going to happen? So it's basically a pedagogy first approach to teaching in which the course materials are introduced outside of the class, and in the in-class time is repurposed for inquiry, application, and assessment in order for better meet the needs of the individual learners. So there is, as I told you, that there are several pedagogical approaches are there. So this is one of the approach which could be very helpful for the students. So the question comes, sir, what are the steps to be done in this pedagogical approaches? Okay, and kindly confirm to me this screen is visible to you all, please. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay. Now I'm going to show you. So these are the steps.
These are the steps, and I'm going to share this. So what are the steps to be done? First and foremost thing is step one. First of all, we must be having, I have told you that we need to plan and design. So as per the lesson plan, objectives and expected outcome, the teacher must identify / search the appropriate content. मतलब आपकी क्लासरूम के लिए appropriate content वो वीडियो फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, या इमेज फॉर्म में हो सकता है, from several, because government of India के initiatives, Creative Commons sources, and so on and so forth, and it should be available in front of you. And so here actually the first and foremost thing which I'm going to talk about is the digital initiatives of Government of India. Kindly confirm to me the digital initiatives PPT is visible on your screens. Yes, sir, Kindly it is confirm. visible. Yes, sir. Yes, sir. Visible. So कंटेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कंटेंट को मैं दो पार्टों में मैं बांटता हूं. एक जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, दूसरा जो है यू हैव टू क्रिएट. सो इसको पहले कहते हैं कोर रिसोर्सेस, दैट मींस एसेंशियल रीडिंग्स. सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लीमेंट्री के पहले बात करेंगे, उसके बाद कोर में जाएंगे. ये सप्लीमेंट्री में 3 important options are available in front of you. There are 3 important options are available in front of you. One of the option is first one is the digital initiatives of Government of India. भारत सरकार की digital initiatives first option है. Second जो है open educational resources. Third one is TED Talks. ये सब बहुत सारे हैं. पहले हमें तो ये पता चले कि आप तो इसके लिए क्यों ये करना चाहते हैं. We want to use this material. Kindly confirm to me any problem with my PowerPoint presentation which I'm showing on your screens. No, sir. Somebody writing in No, the sir. chat box that he No, could not sir. see. PPT I am unable to see PPT, madam. मैडम सर दिख रहे हैं लेकिन PPT. सर एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए अपने पेज को. राजेश जी जी. No, sir. PPT is visible. visible ना? Yes, And Yes, sir. sir. Yes, I yes. think Yes, I sir. want मुझे नहीं दिख everyone रहा of है. you should. Sir, Yes, sir. Yes, clearly sir. We can visible. see. Okay. Right. So the first one is digital initiatives of Government of India. एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर. हाँ कर लीजिएगा. So what are this Government of India and not only the Government of India, state government के बहुत सारे initiatives है. यहाँ से आपके अपने कोर्स के लिए अच्छे खासे मटेरियल मिलेंगे. ओके इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन स्वयं. ओके स्वयं India's finest MOOCs platform where you can get good quality reading material. यहाँ आर्काइवल मोड में आपको मटेरियल मिलेंगे. स्वयं प्रभा India's finest 34 free DTH channel. यह ऑप्शन है. तीसरा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी. चौथा ईपीजी पाठशाला. ओके उसके बाद यूजीसी मूक्स, एनआरओईआर, बहुत सारे. हम एक काम करेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे. ओके मैं क्या करता हूं, आप लोग जो है ईपीजी पाठशाला की ये वेबसाइट है आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस वाले वेबसाइट को ओपन एक बार कर लीजिएगा. इसमें मैं चैट बॉक्स में इसका वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डाल रहा हूं. इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक बार हम लोग ओपन करेंगे. ओके क्योंकि बाकी सारे तो नहीं कर पाएंगे. ईपीजी पाठशाला का लिंक में आप देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूं. एक बार कंफर्म कर लीजिएगा सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप Yes, देखिए. sir. Yes, तो sir. आपको टाइप करना है ईपीजी पाठशाला. जब मैं ईपीजी पाठशाला के लिंक ओपन करता हूं, अब देखिए ये ईपीजी पाठशाला का लिंक खुल गई. और इस वाले साइट में जब हम जाएंगे, इस साइट जस्ट स्क्रॉल इट डाउन जेंटली. ओके बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे. इसमें देखिएगा आपके लिए इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है. ओके
कम से कम आपको 10 मिनट इसमें बिताना है। इसमें क्या क्या चीज आपको सर्च करना है। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के फैकल्टी है, जस्ट क्लिक ऑन द कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन द कंप्यूटर साइंस। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर साइंस। देखिए प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ऑन माय स्क्रीन। पहली बात है आपको ईपीजी पाठशाला के साइट में जाना है। जाने के बाद आपके प्रेफर्ड सब्जेक्ट एरिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा। then select, see, then you can find two options. One is about the paper, second one is about the module. So in the paper part, so you click this button, so many papers are coming. Actually there are 17 papers are there. So click on data structures. For example, I'm showing an option called data structures. अब ये paper data structures के अंदर there are 40 modules are there. Okay, select any one of the module. Okay, this is only for the experimentation, how to access the material from the EPG Pathshala. So introduction to abstract data types. Okay, अब क्या हो गया, मैंने data structures के अंदर introduction to abstract data types मैंने select किया. I could see three options here. Number one is e-text, second one is learn more, third one is self-learning. Okay, first one is e-text, second one is self-learn, learn more, third one is learn more, then third one is self-learning. Self-learning. So आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट एरिया के जो जो मटेरियल आपको यहाँ अवेलेबल है, कम से कम अगले अगले 5 मिनट तक प्लीज फाइंड आउट, एंड एज सुन एज यू कंप्लीट दिस एक्टिविटी, आपके चैट बॉक्स में ऊपर सबसे, अब देखिए मैं आपके चैट बॉक्स में आपको क्या क्या लिखना है, मैं आपको वर्ड फाइल में लिख के दे रहा हूं इधर। चलिए मैं इसी से आपके जो ओके ऑप्शन है शेयर कर। ओके इसी से मैं बेटर यही से करता हूँ। अब मेरा मेरा एमएस वर्ड के स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे सबको? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब बताइए मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैंने क्या 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 लिखा था, एनीबडी कैन रीड? Please search the Please search following the and following submit and in the submit in the chat chat box. box. पहले आपको Subject. लिखना है सब्जेक्ट एंड पेपर टेक्स्ट। ये आपको करना है, ये आपके चैट बॉक्स में ये चीज डालना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया। आपका पेपर का नेम, नेम ऑफ द पेपर रहा है, क्या लिख रहा है मैडम? चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक। उसके बाद आपका मॉड्यूल का नेम,
पेपर नेम, मॉड्यूल का नाम, ई टेक्स्ट, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपका फाइल को डाउनलोड करना है, फाइल हैज टू बी डाउनलोडेड, डाउनलोड द फाइल एंड अपलोड इनटू द गूगल ड्राइव, एंड आपके अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके, आप लोगों ने बताया था कि ये सारे चीज हो जाएगा क्योंकि आपको तो पता है। अपलोड इनटू द गूगल ड्राइव एंड शेयर द लिंक। इसके स्क्रीनशॉट डालना है, डोंट अभी पहले से सारे टाइप मत करना, पीपल आर स्टार्टेड टाइपिंग, डोंट टाइप इट, ओके। अभी अभी मैंने कंप्लीट नहीं हुआ है ये सारे, ये जो 6 points has to be completed and the output of the same can be uploaded in the chat box, हमारे chat box में, and you should write down your name also, this is very very important to me। समझ में आ रहा है सारे, सबको समझ में आ गए? EPG, please search the following from EPG Pathshala। Okay, is it clear to all of you? Sir, kindly explain then the difference between paper and module. Madam, actually in EPG Pathshala, what is happening? There is the way the things have been done. Yes. Actually, they call it as papers, and each paper will be consisting of several modules. Basically, my purpose here is how do we search the material and how can we use the material into the system. So there are so much content is already available in the public domain. So I think this material has to be used. I think we should make a habit of using this one by our participants. Okay. So and you please try to understand whatever I said. This could be it has to be uploaded into the Google Drive. Then it has to work on it. Okay. And now I'm giving, yeah. Sir, please repeat the steps of e-Pathshala where you search the subject and paper and modules. I'll show once again, madam. In that case, then I'll show once again. Kindly look at the screen, please. Kindly look at the screen, please, all of you. Okay. So what I did here, as a step one, I went to the EPG Pathshala. Okay. एक second, आप जरा देखिएगा. I The went. Bluetooth device is ready to pair. Please mute. Please mute. Please mute. Okay. Step number 1, I went to the EPG Pathshala. Madam, आप देख रहे हैं सारे? Is it visible to you, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Step number 1 मैं EPG Pathshala में गया. स्टेप नंबर 2, इसको नीचे लेके आया, स्क्रॉल के नीचे करके, इसमें अंदर कई सारे कोर्सेस, पेपर्स और पेपर के अंदर मॉड्यूल्स मतलब यूनिट्स समझ लो अवेलेबल है, वो भी वीडियो फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, एक्सटेंडेड लिंक्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंस क्लिक किया। कंप्यूटर साइंस क्लिक करने के बाद यहाँ मेरा सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर साइंस। तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर कई सारे पेपर्स हैं। तो पेपर जो है डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो सकता है, और हर एक पेपर के नीचे कई सारे यूनिट्स बना रखा है। वो यूनिट्स को ये लोग मॉड्यूल्स कहते हैं। यूनिट्स दे कॉल इट एज मॉड्यूल्स। सो देयर आर 19 मॉड्यूल्स आर देयर in data structures. No, sorry, 40 modules are there in this data structures. So I took the first module, assuming that आप लोग अपने वाले कोर्स के लिए इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, इसके अंदर 3 चीजें, ई टेक्स्ट, लर्न मोर,
सेल्फ लर्न। जब ई टेक्स्ट के ये कंटेंट आ गए, इस कंटेंट को मैंने आपको क्या कहा था, इसको डाउनलोड करो, आप अपने गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बना के इसको अपलोड करो, उस फोल्डर का लिंक आप वहां शेयर करो। नंबर 2, लर्न मोर में क्या है कि बहुत सारे एक्सटेंडेड रीड लिंक्स वगैरह दे रखा है, किताब भी है, लिंक्स भी है, ग्लोसरी भी है, ओके, ये सारी चीज। और तीसरा जो है सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मतलब ये यूट्यूब मटेरियल है। इस मटेरियल के ऊपर राइट क्लिक करो, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, यहाँ देखिए what option I am highlighting here? Copy video URL. Copy video URL. So I said you just copy this one and paste over there, and that details has to be pasted in the your chat box, आपके नाम के साथ. Okay, so this is what I am asking you to do it. So I will be sharing that link on the screen. This is what I'm going to do. This is the link. Okay, so this is how you want to execute this, and I'm giving you Preeti, when can we break for tea? 12:30. Okay, shall we confine only for 15 minutes? Is it Yeah. okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Friends, at 12 we will be breaking for tea at 12:30. But 15 minutes break will be given. Even during the break also you have to complete this. इसके बाद, as I told you that this is a hands-on level of workshop from now onwards. So kindly complete this. As soon as you complete, we'll be reassembling back. उसके बाद हम आगे सर बढ़ने इट की इज कोशिश। सर उसका लिंक नहीं मिल रहा, और वो ड्राइव में तो सेव कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग फॉर सेविंग इट इन ड्राइव, हाँ, तो शेयर करते समय उसका लिंक आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है सर। आपके ड्राइव का लिंक नहीं आ रहा है? हाँ, ड्राइव में उस ओ ठीक से डाउनलोड नहीं हो रहा है, शायद उसके कारण हो रहा है, या मैडम एक बार ऐसा करो ना, एक बार ट्राई कर हाँ दो। वैसे तो टी के बाद वैसे ही मैं बताने वाला हूँ सारी चीज। ठीक है सर, आप ओके इस सर, ओके आप थैंक इसमें जितने सारे चीज आपका हो जाए वो बता दी, ओके कर सर, दीजिएगा। बाई चांस ओके नहीं होता है आपको दोबारा मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद ही आगे बढ़ाऊंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। मैं अभी मेरा वेबकैम को म्यूट कर रहा हूँ, माइक्रोफोन को भी म्यूट कर रहा हूँ। कोई भी Yes. डाउट है पूछ लीजिएगा। देन अदरवाइज विल ब्रेक फॉर टी, बट टी के दौरान ये सारे आपको करना है, अपलोड करना है। ओके, Yes. Participant, please don't leave the meeting. Just 15 minutes का break लीजिए and stay connected. Good afternoon, sir. Sir, that is sir is there. Hello. सर गुड आफ्टरनून सर। Sir, good afternoon, sir. हाउ आर यू सर? It's nice to see you again Sir, for our same, participants. same here. Thanks for the invitation. Namaskar, sir. Yeah. How are you, sir? Good. And thank you for sharing your valuable time with us. सर एक मुहिम चल रहा है, बस इस मुहिम में तो जुड़े बिल्कुल हुए। बिल्कुल NEP 2020 का मुहिम है। NEP 20. Sir, actually we have developed two background papers, one for the blended learning, and so actually उसी को लेके, and this is one of जी the important task also. But हाँ lot of dots need to be connected. So करेक्ट, those things are going on. Those things are going on. बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ठीक है सर, आप चाय लीजिए, बिकॉज यू विल बी एग्जॉस्टेड अदरवाइज। Right, sir. No problem. We'll meet. Okay, और okay, फिर sir. बाद में बात करेंगे हम, ठीक है Right, सर? sir. Right, sir. Right, sir. ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। Excuse me, sir. Participants, break के बाद पूछिए। कौन बजेगा? Okay, ma'am. We'll meet again. Please don't leave the meeting. में करना पड़ेगा, समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अब I am going to explain a little bit of practical part, theoretical part, then I'll take you to the practical part. Can I request one of the participant, Dr. Rajesh and Song? Dr. Rajesh, can you hear Yes, me? sir. Yes, sir. सर Yes, sir. एक बार पढ़ लीजिएगा राजेश जी, ये स्क्रीन पे जो Open आपको दिख रहा है। educational. Yes, sir. Thank you, sir. Yes. Open educational resources (OER) are material offered freely and openly to use and adapt for teaching, learning, development, and research. The Commonwealth of Learning (COL). Thank you, Rajesh. So
Open educational resources are the reading material offered freely and openly to use and adapt for teaching, learning, and development and research. Very important. Next, can I request Dr. Sapna Rani? Sapna Rani is Ramtek. जी सर. मैडम एक बार पढ़ लीजिएगा जो स्क्रीन पे आ रहे हैं. जोर से पढ़ना है मैडम. जी सर. Open educational resources are teaching and learning materials that are freely available online for everyone to use, whether you are in instructor, student, or self-learner. Examples of OER include full courses, course modules, syllabi, lectures, homework assignments, quizzes, lab and classroom activities, pedagogical materials, games, simulations, and many more resources contained in digital media collections from around the world. OER Commons. Thank you madam, thank you very much. Thank you, So sir. ये OER को कौन कौन से लोग यूज करेंगे? स्टूडेंट यूज करेंगे, टीचर यूज करेंगे, सेल्फ लर्नर यूज करेंगे. फिलहाल तो हम लोग टीचर का ही पहले बात हम करेंगे इसके अंदर. और इसके अंदर देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है. फुल कोर्सेस, कोर्स मॉड्यूल, सिलेबस, लेक्चर्स, होमवर्क असाइनमेंट्स, क्या नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अब ये समझने की हम कोशिश करेंगे. अब OER कैसे बनाना हमारा मकसद नहीं है, बट जो मटेरियल ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज OER, इसके लिए क्या क्या कार्रवाई होते हैं. ओके, इट्स अबाउट द मटेरियल. तो ये मटेरियल जो है OER में बनाने के लिए एक मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं वो है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस कंसिडरेशंस. ओके, सो क्रिएटिव कॉमन्स. अच्छा, एक मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं. एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसमें वॉइस आ रहे नहीं आ रहे. इसका साउंड आ रहा है? नो सर. नहीं आ रहा है सर. एक सेकंड मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको ना ये यहाँ बताइए, यहाँ आ रहा है? No, sir. नो सर. चलिए, मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करता हूं आपके चैट बॉक्स में. ओके, आप इस वीडियो को एक बार मतलब ये 5 मिनट का वीडियो है, इसको बाकायदा चेक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड इसको वीडियो को एक बार आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं पता नहीं यहाँ तो चल नहीं पा रहे. इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसके बाद वापस देखेंगे. I request all of you, please go through the video which was shared in the chat box. Then I will continue the lecture.
And once you completely read this, please say video over आपके chat box में. After watching this video, every participant has to say watched. Yes, in the chat box. मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yeah, please, I request all the participants to completely go through that video, then I'll be proceeding. एक बार वीडियो पढ़ने के बाद यस लिखना है चैट बॉक्स में. Okay, I think you must have gone through this video. So what is the nutshell it is saying? अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर पहले में हमने क्या किया था डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहले हमने क्या किया था डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो पहले हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था उसमें हमने प्रैक्टिकल किया था हाउ डू वी सर्च द कंटेंट थ्रू ईपीजी पाठशाला देन हाउ डू वी अरेंज द कंटेंट वो थोड़ा सा रह गया मैं प्रैक्टिकल अभी बताता हूँ उसको कैसे लेके जाना है दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्रिएटिव कॉमन्स सो क्रिएटिव कॉमन्स में आप देखिएगा there are so much content is available there so
Can you see all of you this one? ये जो स्क्रीनशॉट है, प्रीति आप इसको ना स्क्रीन इसको कैप्चर करके इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। जी सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिएगा ये स्क्रीनशॉट, इसमें एक चीज आपको दिख रहा है इसमें, एक ये बेसिकली कॉन्सेप्ट मैप को लेके बनाया था। चलो अब छोड़ देना कॉन्सेप्ट मैप, बहुत बात की बात है। अब यही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अब देखिए मेरा माउस पॉइंटर को फॉलो कर लीजिएगा। मैं यहाँ माउस पॉइंटर को घुमा रहा हूँ, एक बार माउस पॉइंटर को फॉलो कर लीजिएगा। अब कोई कंफर्म कर लीजिए मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको आपके वाले स्क्रीन में? जी सर। यस सर, यस। अब देखिए, अब ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस के बारे में कई सारे चीज हम इसको कर सकते हैं, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कैन बी accessed through CC सर्च, मतलब क्रिएटिव कॉमन्स के सर्च, और थ्रू गूगल एडवांस सर्च, अगेन थ्रू यूट्यूब फिल्टर। ओके, सो एक तो ये तरीका है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और ये रिसोर्सेस में किस टाइप के रिसोर्सेस है? इसमें वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, सिमुलेशंस है, यानी दुनिया भर की चीज है। सो अब देखिए, जब इस चीज को इस तरीके से समझाओगे, इट विल बी इजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली क्रिएटिव कॉमन्स की सर्च से कैसे सर्च करेंगे? गूगल एडवांस सर्च, क्योंकि हम सबको पता है कि गूगल एडवांस सर्च को कैसे करेंगे, और यूट्यूब में बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल है, उसको सर्च कैसे करेंगे? ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट ऑप्शन राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विथ द गूगल एडवांस सर्च। ओके, पहले गूगल में सर्च करेंगे, एडवांस सर्च तो बाद में करेंगे। so let me stop sharing my screen. Let me I'll share the content. Okay, I'm going to show you how exactly this will work. I'm clicking on the share button, search. एक बार मुझे बता दीजिएगा, इज इट मेरा सर्च बॉक्स आपको, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? मेरे गूगल के ब्राउजर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे? नहीं Sir, सर। not yet. It is black canvas. Share the content. How about now? Now it is Okay. Okay. Now basically what happened, whatever I've been showing to you is ये गूगल ब्राउजर है। अब गूगल में से हमारे कंटेंट को कैसे सर्च करना है? सबसे अक्सर रिक्वेस्ट आता है, दिस इज अबाउट द सर्चिंग ऑफ द कंटेंट, इमेज बेस्ड कंटेंट। सो इमेज बेस्ड कंटेंट को सर्च कैसे किया जाता है? तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली वील गो टू गूगल एंड यहाँ बीच में सर्च बॉक्स में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फ्लिप्ड लर्निंग के इमेजेस चाहिए। आई सिंपली टाइप द फ्लिप्ड लर्निंग। ओके, टाइप करने के बाद हम लोग स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम इमेजेस वाली बटन देखें, यहाँ एक स्क्रीन पे ऑल इमेजेस, बुक्स, वीडियोस, न्यूज, मोर है। हम इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, और इमेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इमेज हम आपको अच्छा लगता है उसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करके यूज कर लेते हैं। आई सेड दिस इज नॉट करेक्ट, ऑल इमेजेस आर नॉट फ्री। तो सर पता कैसे चलता है हमें कि इमेजेस फ्री है या क्रिएटिव कॉमन्स वाली जो है? सो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, यहाँ देखिए सबको, विच ऑप्शन आई एम हाइलाइटिंग ऑन योर स्क्रीन्स? tools. हाँ, सो आप टूल्स के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिए।
टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट लाइन के नीचे एक और लाइन आ गई, वो पहले में लिखा है साइज, सेकेंड वन इज कलर, थर्ड वन इज टाइप, fourth one is time, fifth one is usage rights. Okay, so I'm more concerned about the usage rights. Click on the button next to the usage rights. आपके स्क्रीन पे the three options are coming. One is all, second one is Creative Commons licenses, third one is commercial and other licenses. हमें तो Creative Commons वाले लाइसेंस वाली वीडियोस ही चाहिए, इमेजेस ही चाहिए. So click on this. Friends, just give me a minute, please. Okay, now what happened? Now these are the images which you are going to see on your screen. They are free. They are Creative Commons images, but all even in the Creative Commons also, आपने देखा होगा कुछ licensing elements are there. I'm not going in detail of that. Basically हमारा मकसद है how the content need to be searched. For example, मुझे मैं एक बार check करना चाहता हूँ, is this material, is this image is free? एक बार लिस्टेबल, click on that image, and it has been taking me to a website called Pixabay. Understand carefully, friends. This has been taken me to a site called Pixabay. एक बार आप में से कोई ना कोई पढ़ लीजिए, यहाँ क्या लिख के आया है? Any participant, please? Yes, sir. It's a Pixabay license, free for commercial use, no attributions required. Yes, thank you, ma'am. So, see, basically what happened, the Creative Commons licenses were, one thing which is very common is attribution. That means, you had to give the attribute to the teacher who has developed, the person who has developed it. But यहाँ तो ये लिख के आ रहा है कि it can be used freely. So, since it is being given very freely, so you can go to that free download and you can download. This is how you can search the content into in the Google browser. So what are the steps we did? Step number one, we went to the google.com. Step number two, we entered the keywords. Step number three, we clicked on the tools. We clicked on the images. Step number four, we click on the tools. Step number five, we click on usage rights. Step number six, we click on the Creative Commons licenses. Then we जो पिक्चर हमें जो लेना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले पिक्चर है, कॉमन्स विकीमीडिया है, ये एक मिनट देखते हैं, ये लिखा है फ्लिप्ड क्लासरूम, ये लिखा है, इसमें देखिएगा is it freely available और इसके अंदर कुछ वो लाइसेंस राइट्स है. So it is taking you to another site. Okay. So इसके अंदर जो क्लास, इसके अंदर क्या लिख रखा है, and yes, this is available for the free download के लिए available है. Okay, you see download SVG is available, and what about the licensing? इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े टाइम जो है इसके ऊपर आप स्पेंड कर लीजिएगा. Okay, so that you will come to know that what all the other sites are available and how these sites can be helpful for you. इसके अलावा okay, ये वाली साइट है, कॉमन्स विकीमीडिया में है. दिस इज अगेन फ्लिप्ड लर्निंग के लिए तो काफी अक्सर यूज हुआ करता था. ओके, ये भी देख लीजिएगा. इसके अंदर सीसी लाइसेंस दे रखा है, क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस, सम राइट्स इसके अंदर जो है कुछ दे रखा है. यू आर फ्री टू शेयर ये कंटेंट को, दिस फ्री टू रीमिक्स द कंटेंट. तो एट्रीब्यूशन आपको देना ही देना है. और शेयर अलाइक मतलब if you remix, transform or build upon the material,
you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original. So मैं इसलिए आपको कह रहा था कि whatever, I think that is the power of the Creative Commons. Okay, so first of all, try to understand this Creative Commons licenses. So this is the one activity. First, पहले बात आपको मैं image के लिए search करने के लिए समझा दिया. Similarly, मैं आपको एक और option के पास लेके जाऊंगा. वो that option is basically अब तो flipped learning है. अब flipped learning को ऊपर हमें articles चाहिए. Many times we want articles. ये articles आपको कहाँ से मिलेंगे? I hope everybody is following me. I hope everybody is following me. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जब तक आप यस नहीं बोलेंगे तो हमें क्या पता चलता ना कैमरा बंद है आप लोगों का, आप लोग यस भी नहीं बोल रहे हो. Either you can use the chat box. I think I'm not happy the way you people are responding. I think इससे हमें लग रहा है कि हम सबको अच्छा लग रहा है कि ये मोनोलॉग क्लासेस आर इम्पोर्टेंट. नो, मोनोलॉग क्लासेस सर आर लेकिन मोनोटोनस. ये जो है ये मोबाइल पर वर्क नहीं करता है शायद. इट नीड्स लैपटॉप ओनली. मैडम देखिए, मोबाइल फोन लेक्चर तक ही सीमित है मैडम. प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए. मैडम आप कैसे पढ़ाते हो अपने क्लासेस में? मैडम ये अभी मैं ये कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट मत समझ लीजिएगा, एक लैपटॉप जरूर ले लीजिएगा आप लोग. लैपटॉप है सर. आई एम ट्राइंग ऑन द मोबाइल आल्सो बट इट इज नॉट No, madam, everything cannot work on the mobile phone, ma'am. yeah okay sir. Mobile phone is only good receiver, that's all. We cannot do many things over the phone also. Okay, now Creative Commons में मैंने आपको images, I have told you that how to search the images from the Google browser. Now secondly, lot of good quality material is available in the Google, but how do we search? So उसके लिए तो सीधा browser में काम नहीं करेगा. What can we do? Open the browser and type Google. Simply type Google Advanced Search. Type Google Advanced. इसके बाद I'll give you time. I request all of you. Sumit, are you following? Sumit, are you following? Sir. Yes, sir. Sir. Okay. We are writing steps, sir. Please, because afterwards I'll give you 10 minutes time and you need to practice these things. Okay. Second thing is, how do we search the text, Creative Commons text material from the Google? Step number 1, open the browser and type Google Advanced Search. Step number 2, यहाँ देखिए, once you type it, you will find out Google Advanced Search. There is a link over there. Click on the Google Advanced Search. When you type this Google Advanced Search like this, you can see a table like this on your screen. You can see an advanced search table. You can see an advanced search table. In this advanced search table, few important things need to be added. First of all, what type of material need to be, what type of keywords need to be added? Okay, मुझे material चाहिए flipped learning के ऊपर. I simply type flipped learning. Then scroll it down. Okay, come to the bottom of the screen. Can I ask you that what is the option which I am highlighting on your screens? Usage rights. Usage rights is the last option. Okay, what is written in front of them? Not filtered by license. Not filtered by the license. Yes. If I click on this one, what are the options are coming on your screen? Tell me. Not filtered by license. Free to use or share. Free to Use or use share, or even share, commercial. even commercial. Free to share or modify. Free to Use, share or modify. even commercial. Yes. Thank you very much. Now you can see so many options are coming in front of you. First one, by default, when you search any content, that's the difference between normal searching and advanced searching.
And if you click on, if you simply use the normal searching, you don't get all these things. So if you want a material which is free to use or share, you can select this option. And if you want to use even commercially, you can use this option. If you want a material which you can modify apart from use and share, you can use the option number 4. If you want a material which is free to share, modify, even commercially, ये बल्ले बल्ले है ना, ऐसा चीज कहाँ मिलता है हमें? That's what the power of the internet. So many things are already there. So let me just select the second option, free to use or share. ये select किया मैंने. So again I go back. So I entered the first option. I've entered the first option, flipped learning. So first thing is I have entered the option called and all the words में तो जिस topic के लिए मुझे content चाहिए मैंने ये लिखा. If you just scroll it down, last में usage rights में, बाकी चीज बाद में देख लीजिएगा. I have entered free to use or share. Then I click on advanced search. अब देखिएगा आपको क्या क्या चीज मिल रहा है. If you just scroll it down, first thing which is struck my mind is Springer Open. आप सबको पता है Springer Open is a peer reviewed journal, excellent content, high quality journal. उसके कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है. So इसके अंदर एक बार क्लिक करके देखें, is it really useful to me? If you just click on this one, can you please tell me what is the name of the journal? Research and practice in technology enhanced learning. Yes, research and practice in technology enhanced learning. Okay, ये टाइटल है. Okay, and यहाँ लिखा है डाउनलोड PDF, मतलब ये डाउनलोडेबल ऑप्शन अवेलेबल है. बट बिफोर डाउनलोडिंग एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ, इज इट रियली डाउनलोडेबल? वो ऑप्शन हमें दे रखा है. जस्ट गो टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. पेपर तो पढ़ लीजिए, अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है. और लास्ट में जाने के बाद देखिए, कैन आई रिक्वेस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट टू काइंडली रीड? वैशाली जी एक बार पढ़ सकते हैं? वैशाली मैडम. Rights and permissions. Open access. This is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons ORG license by 4.0, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media, provided you give appropriate credit to the original authors and the source. Provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made. Thank you, ma'am. So I think it is allowed, provided if you give the rights to these people. Okay. So हम क्या करेंगे, उसको सीधा यूज करने की कोशिश करेंगे. तो इसको यूज करने के लिए दो तरीके. फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन यूज द लिंक. इसका लिंक को सीधा ओपन करो एंड इसको यूज करो, या दूसरा है ऑप्शन है इसका डाउनलोड करो. बट एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे मन में जो आ रहा है, सर ये तो अच्छा है, बट इन सारे चीजों को समेटने के लिए हमारे पास कोई ऐसे फॉर्मेट्स की जरूरत तो नहीं है? यस. अब देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखाता हूं. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग. देखिए इसमें क्या लिख रखा हूं मैंने. दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर ब्लेंडेड लर्निंग क्लास. ओके. सो ये देखिएगा, जब आप वीडियो को यूज करोगे, पहली बात है आपको तो टॉपिक का नाम आपको लिख के रखना पड़ेगा. सो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर हियर? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर एज फार एज ओके, वीडियो को बाद में आएंगे. टेक्स्ट के बारे में, नो, लेट मी स्टार्ट विद द टेक्स्ट. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द टेक्स्ट? 3, sir. 3 columns are there. What is the first one? Topic. Topic name.
What is the second one? Google Drive Google link, Drive link. direct Google direct Drive link. link or Or direct link. what is the third one? remark. Remark. Remarks. So आपको फ्लिप्ड लर्निंग के ऊपर एक आर्टिकल मिल गई, तो इस पर लिख दीजिएगा फ्लिप्ड लर्निंग, पूरा आर्टिकल का नाम लिख देना. फर्स्ट वन, ये गूगल ड्राइव लिंक का मतलब है समटाइम्स you need to download the material, upload it to the Google Drive and use it. If that is the case, you can write the Google Drive link here. Sometimes what happened, you can get the direct link from the browser. अभी हमने देखा, ओके, अब देखिए आर्टिकल देखा, आर्टिकल का लिंक है इसके अंदर ना, देखिए दिस इज द लिंक ऑफ द आर्टिकल, इसको ऐसे कॉपी कर लो और इस टेबल में आके सीधा इसको पेस्ट कर लो. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी इज you should write down in the remarks this CCL was accessed on 19th May 2022 is going to be used for essential reading material for week 1 topic 1. Can anybody reads what has written over here? This CC article was accessed on 19th May 2022. Is going to be used for essential reading material for week 1 public topic 1. Yes. Okay. मान लीजिएगा आपका तो 20 टॉपिक्स का कोर्स है, 30 टॉपिक्स का कोर्स है, 5 हफ्ते का कोर्स है या 15 हफ्ते का कोर्स है, राइट? सो ये दिस इज द वे यू नीड टू assemble your course. This is what I am talking about, the planning and designing your course. Okay, so text material which is supplementary in nature, क्योंकि मैंने कहा था आपको there are two types of materials are there. One is a core material which you have to prepare, which is again part of the essential reading. Second one is a supplementary reading material. Second one is a, sorry, somebody wants to say something, please. So second one is a supplementary material. Okay, so I think we have been talking about the core material. We have been talking about the supplementary material. Supplementary material में पहला source of information, the first source of information is about the digital initiatives of Government of India. Second one is about the Creative Commons material. Okay, ये इस तरीके से आपको ये सारी चीजों को अरेंज करना है. Okay, now the third important point is about the YouTube. अब YouTube में बहुत कुछ वीडियो मटेरियल अवेलेबल है. So how do we search? ये तीन चीज बताऊंगा आपको. पहले मैंने आपको बता दिया इमेजेस को सर्च कैसे करना है. सेकंड मैंने आपको बता दिया गूगल एडवांस सर्च से टेक्स्ट को कैसे करना है. अब थर्ड में आपको बता रहा हूँ हाउ डू यू सर्च द वीडियो मटेरियल from the YouTube. Kindly confirm to me, my screen is visible to you, all of you? Yes, sir. Okay. Yes, ये मेरा YouTube का YouTube वाला लिंक है. इसमें देखिए मैं यहाँ टाइप किया था youtube.com एंड इसमें सर्च करता हूँ. मुझे करना था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एरिया है कंप्यूटर. ये यहाँ तक सबको पता है. ओके, अब बट इसके बाद स्टेप वन क्या बताया था मैंने? स्टेप वन, टाइप youtube.com. स्टेप टू, टाइप in the search box, type the keywords. Now step 3 में देखिए which option I am highlighting here. filters. आप फिल्टर के ऊपर एक बार क्लिक कर दीजिएगा. आपके सामने 5 तरह का फिल्टर्स you are showing. One is on uploaded date,
You can put a filter on upload date. You can put a filter on type. You can put a filter on duration. You can put a filter on features. You can put a filter on sort by. Okay. So what you can do, because we want, what is the purpose of searching all these things? We want to find out the Creative Commons material from the YouTube so that I can use it without any taking anyone's approval. Okay. I just click on the Creative Commons. अब देखिएगा, there are so many videos are available under computer programming in the Creative Commons. So let me open this video. This is basically our IIT Mumbai video. IIT Mumbai video. How do I know that whether this video is free or not? Just go to the bottom of the screen. Sometimes people can write down the details as such here. Okay. Or otherwise, what we can do, if you just click on the share button, and this video is free, and this video, because already we have filtered out this video, and this video can be used like this. Okay. अभी मैं आपको as per my clock it is 1:30. मैं आपको अच्छा, इसके अलावा और भी चीज बताता हूँ. ओके. इस वीडियो को सेव कैसे करना है? अब इसको देखिए, ऊपर देखिएगा, इसका लिंक आ रहा है. जिसको हम बोलते हैं URL. To copy this, go to the format. ओके. इस फॉर्मेट में देखिए वीडियो, इसमें वीडियो फॉर्मेट में कितने कॉलम्स है टेबल में, या कितने कॉलम्स है? 4. First one is topic name, second one is video URL, third one is interactive video URL. अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में. Last में remarks. Okay. So write down the topic name here and copy the video URL. वहां से जो कॉपी करके लाया उसको यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा, and write down the remarks. What is this video going to be used? So next 10 minutes, I will be giving you time to practice in front of me. And first one is go to browser and search the Creative Commons. At least one or two Creative Commons images has to be searched. Second thing, go to the Google Advanced browser, search this one, text material. Go to YouTube and search this point. ये तीनों चीज आप कर लीजिएगा. ये तीनों चीज करने के बाद, and जिसका काम हो गया, that they have to post it in the chat box. Once that has been completed, then I'll be explaining to you how to one simple tool which is a very good screen capture, and also you can make the content interactive. Okay. मैं आपको 10 मिनट का समय दे रहा हूं. As per my clock it is 1:32. The 10 minute is 1:42. And please ensure that Preeti, they had to post it in the chat box. I think Yes, sir. I'm little unhappy that people are not receptive. I'm saying that please write down in the chat box. I think I want every one of you should do the needful. Okay. Please go ahead. Your time starts now.
I have opened the chat box. I want every participant after 10 minutes, kindly post it on the chat box, please. I wish to know that what are the things you have searched. This is very, very important to me. सर सर एक्सक्यूज मी सर, कौन से फॉर्मेट में देना है? वर्ड वर्ड में डाल के वो जैसे आपने वो किया, वो उसी प्रकार से करना है? बिल्कुल 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 उसी प्रकार से कर लीजिएगा। एक एक हाँ एक इमेज, एक हाँ, एक लिंक, एक 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 इमेज, एक एक, एक इमेज, एक टेक्स्ट लिंक और टेक्स्ट लिंक। एक एक यूट्यूब लिंक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से किया है सर टॉपिक। हाँ कोई बात चलेगा नहीं, ना? कोई बात। सी बेसिकली अभी अभी आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट योर डोमेन, बेसिकली द स्किल इज हाँ, मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ओके, ओके राइट, ओके सर, थैंक यू। kindly post it on the chat box please, I'm waiting. We can go up to 2:15 ना? सर सवा 2 बजे तक जा सकते हैं ना? जी 2:15 सर तक जी, है? it is 2:30 up to 2:30 but we can stop on 2:15 also, नो नो, आप बताइए। सी क्योंकि अपन ने 15 मिनट्स का ही ब्रेक दिया था ना सर, तो 15 2:15 भी, मिनट्स का। यस यस 2:15 भी अपन एंड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। Yes, this is more on practical oriented, so I want them to at least practice in front of me, otherwise सुनने से तो 50% ही जाएगा, प्रैक्टिस करने से तो कम से यस कम। सर।
एंड जो मैंने आपको दिया था एक प्रोजेक्ट वर्क, एंड आप थोड़ा इंसिस्ट कर लीजिएगा, एटलीस्ट दीस पीपल कैन डू दैट। ओके, Yes, sir. yeah, good. Professor Kanchan Boyer has written, very good, sir. Friends, I think you should also follow him, how he's nicely did it. I want every one of you should do the needful. मैं आपको और 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं. I want every one of you should do. Look at the chat. Look at the chat box. How Professor Kanchan is writing. Yes, Girish, good. Girish जी ने तो YouTube वीडियो लिखा था. कर लीजिएगा, मैं नीचे आपको एक छोटा सा फॉर्मेट लिख रहा हूँ, उसमें ऐसा लिखना, सब्जेक्ट, इमेज सोर्स, एडवांस टेक्स्ट सोर्स, YouTube link. I think this is the way, if you can write that would be better. Subject, उसके नीचे इमेज का सोर्स, उसके नीचे एडवांस टेक्स्ट का सोर्स, उसके नीचे YouTube लिंक. If you can write down what happened, तो जो भी आप सर्च करेंगे, एंड कल के दिन आपके ऑर्गेनाइजर्स भी आपको एवेल्युएट करेंगे ना आपने क्या क्या किया था, दैट विल बी मच हेल्पफुल. रेवती जी, इसी तरीके से करना. प्लीज राइट डाउन द वे इट हैज बीन रिटन ओवर देयर. I could see only one people only. Subject, image source, advanced text source, YouTube link. Yeah. Another 3 minutes more. Last half an hour में हम वीडियो कैप्चरिंग का एक टूल बताएंगे, और उस वीडियो को इंटरेक्टिव कैसे बनाना है वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा. प्रैक्टिस भी आपको करना है. You have to practice that also. Another maximum 3 minutes left.
Okay, I think friends, let's move back to one more feature. I think it does not look nice that मैं आपको बीच में रोक देता हूँ. Okay, चलिए आप बाद में एक बार इसको कर लीजिएगा. And I think I hope you enjoy this term. So अब एक और इंटरेस्टिंग की बात आपने यहाँ भी देखा होगा. So you are using the video material directly from the YouTube. And what is the guarantee that whatever material you have given, whether the student have taken the advantage of it or not? Because ये क्यों दे रहे हैं? Please try to understand. This video material you will be sharing for the students for the either before the classroom understanding or after the classroom understanding. So either you created the video or somebody else created video. Now we want to make this video as learner centric. So how do we make this video learner centric? So there are two options are there. Option number one, you create a video and you convert that video, your own video, into interactive. What is interactive? Interactive means embedding the questions on the top of the video so that that 5 minutes of 10 minutes of video you can pause in multiple places and you want to take a reflection of what has been transformed. Whether, for example, there is a 10 minutes video. पहले 5 मिनट में क्या ट्रांसफर हुआ? You can pose a question. It could be a multiple choice quiz. It could be supporting the critical thinking, or it could be supporting a notes. My point is that I think this is the way you can make these videos interactive. But ये एक technique है. But first of all, foremost thing, you as a teachers need to understand why we are going to give. कई बार क्या होता है, अभी मैं कई बार वीडियोस में वर्कशॉप में सुनता हूँ, लोग कहते हैं हाँ सर वीडियोस हम दे रहे हैं. अरे क्या दे रहे हैं? Simply uploading is not everything. So I think this is one of the important tasks to the participants. जब तक ये सारे चीज नहीं करेंगे इनका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा. बता दीजिएगा. Every participant has to complete these activities. इसके स्क्रीनशॉट्स आप पीपीटी में मांग लीजिएगा. आपको तो पता है नीपा का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में जैसे करवाता हूँ. इनसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा कोर्स का 4-5 टॉपिक्स आप ले लीजिए, 2 टॉपिक्स ले दीजिएगा. एंड उसके लिए प्लान कैसे किया जाता है. क्लासरूम में बताने के लिए हमें प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं. बट व्हेन दे आर गोइंग टू यूज दिस ऑनलाइन मोड, कैसे किया जाता है. एंड ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. So friends, now I am going to demonstrate. There are so many tools are there, but one of the tool which is easy to use and which is very popular is, the name of the tool is Screencastify. There are so many tools are there, but one of the tool which is facilitating the screen capture effectively. एक बार कंफर्म कर लीजिएगा. Screencastify.com वेबसाइट आपके स्क्रीन पे आ रहा है? Yes, sir. Good. Screencastify basically a screen video recorder है. This is basically a screen video recorder. मतलब जो चीज स्क्रीन पे जो आ रहा है वो वेबसाइट हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकता है, पावर पॉइंट फाइल हो सकता है, गूगल डॉक हो सकता है, गूगल शीट हो सकता है, गूगल स्लाइड हो सकता है. ओके, एनीथिंग. What is important is you can capture and you can convert it as a resource. And what is more important to me, after converting the resource, you can make it interactive. इसके लिए 3-4 चीजों की जरूरत है. Okay. Let me just write down I think just confirm to me that whiteboard is coming on your screens now. Let me see. No, sir. Now it's coming. Whiteboard is coming, sir. Okay. Yeah, now coming.
let me write down the pen tool. Okay. Oh, this is little new, so नहीं आ रहा है. huh? Wait, participant, wait. It is not working. एक काम करता हूँ मैं इसमें उसी को मैं वर्ड फाइल को ही ले लेता हूँ, मेरे लिए आसान. प्रीति, कैन यू सी द माय वर्ड फाइल? Yes, sir. It is visible. नाउ ये मेरे लिए बढ़िया है उससे. Okay. What are the things you can we can do in the screencastify? So the requirements very important है. So मैं मुख्य तौर पे कुछ requirements के बारे में यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ. The requirements for the screencastify are: number 1, desktop or laptop. Okay. Number 2, Google Chrome browser. Number 3, Screencastify integration with the Google Chrome. My screen is visible clearly, Preeti? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? Is it okay now? Yes, sir. It is. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. So first one, आपके पास desktop और laptop होना चाहिए. It will not work in the mobile phone. This is very important. Okay. Second one, Google Chrome browser चाहिए और Screencastify integration with the Google, क्योंकि ये तो simple Google Chrome extension है. और उसके बाद सबसे important क्या है? What is the objective? What is the objective and expected outcome of the video? अच्छा, उससे पहले base of the video. Base of the video means ये कोई वेबसाइट को बेस लेके मान रहे हैं और पीपीटी को बेस लेके मान रहे हैं या गूगल स्लाइड वेबसाइट को लेके वेबसाइट पीछे बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, बेस ऑफ द वीडियो और पीपीटी और गूगल ड्राइव. और इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट वाली बात है. टाइप ऑफ द वीडियो. Is it a content video or demonstration video for practical purpose? मतलब ये सारी चीज हमें क्लियर होना चाहिए. हमारे पास डेस्कटॉप और लैपटॉप होना चाहिए. गूगल क्रोम ब्राउजर में ही चलेगा. नो अदर ब्राउजर विल वर्क. स्क्रीनकास्टिफाई इंटीग्रेशन विद गूगल क्रोम ब्राउजर ये होना चाहिए. टाइप ऑफ द वीडियो, कंटेंट वीडियो या डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो. बेस ऑफ द वीडियो, वेबसाइट और पीपीटी और गूगल स्लाइड. Okay. And very importantly, what is the objective and expected outcome of the video? और दूसरा last option, last but one, duration of the video. Eighth option, what to highlight, what to speak, and what extent to speak. When you are developing the e-content, you should be very clear about these things. क्या क्या चीजों को हाईलाइट करना है, क्या बोलना है, किस हद तक बोलना है. And last point is process of dissemination.
प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन, इसमें प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन में दो स्टेप्स है. एक फर्स्ट वन अपलोडिंग इनटू YouTube. Second one is making the, see, first one is uploading into the YouTube, sharing the URL with the students. Second one is making the video interactive and share the interactive video URL with the. प्रीति ये करवा लीजिएगा जरूर, ये मैं पूरा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं इनको, ये जरूर करवा दीजिएगा. Yes, sir. और करवा के, and this is very important activity also. Now it is going to be very much useful for this for the faculty members. Okay, so friends, this is very important, and I request all of you kindly look into this one. आपके पास डेस्कटॉप लैपटॉप होना चाहिए. गूगल क्रोम ब्राउजर, यस मेरे पास है. स्क्रीन कास्टिफाई इंटीग्रेशन, आप यूट्यूब में बहुत सिंपल वीडियोस है, इसमें ज्यादा इतना समय नहीं लगता. And type of the video, of course, here actually I am taking the I'm preparing the content video. I don't want to prepare the demonstration video. It's a content video, and the base of the video I am taking as a Google slide. In my example, I am taking, so I have already prepared a slides and it is there in the Google, so I'm going to use the same. And what is the objective and expected outcome of the video? It is awareness creation. Okay, and this is basically the expected outcome of the video is awareness creation. The duration of the video is 2 minutes. I think this is how you need to work on this. And what are the things? And of course I have a clarity. Process of demonstration, so I will upload into the YouTube. ओके, यूट्यूब का देखता हूँ, समय मिलता है तो मैं बताऊंगा. अभी मैडम ने तो 2:30 बजे तक जाने के लिए कहा था, कोई दिक्कत नहीं. I find time and I'll go up to 2:30. And then very this is important, making the video interactive. Okay, this is very important. You have to understand. I hope every one of you taken a screenshot of all these things. आप एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके वाले व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा. Yes, Yes, sir, आ गया. yes, sir. आ गया ना? Yes, sir. भेज दिया मैंने. क्या बात है यार, बहुत फास्ट है हमारे लोग. Okay, now let me go back to the screen Google Chrome में. So now I think Screencastify is coming on your screens now. Okay? Yes, sir. देखिए, अब मैं क्या करूंगा, I think this is what the Screencastify. I'll close the other things also. Right. I have installed the software. Installation is not a big deal at all. So इसको वीडियो कैसे बनेगा? That is more important. Need to understand. So let me take let me take this PPT. And actually this is not a PPT. This has been prepared with the help of Google slide. I opened it. Okay, ये open किया था. Once you install the Screencastify, you can get this orange color arrow. Can you see the orange color arrow on your screens? Yes, sir. Yeah, and this orange color arrow indicates that Screencastify is installed and ready to take the instructions from you. Okay, let's do it. How this process will work. Step number 1, जो screen Google slide मैंने open किया था, that is number 1. Step number 2, yes, then I click on the Screencastify. Orange color arrow के ऊपर मैंने click किया मैंने. Then you see यहाँ 5 minutes of the video can be created. When you install the Screencastify, ये आपके Google Drive में एक folder बना के रखेगा. And this goes into that. You can see 3 options here: browser tab, desktop, and webcam. If you want the teacher also to be included, select the desktop. नीचे 2 options आ रहे हैं,
enable the microphone so that whatever you speak and it will be get recorded. If you embed the webcam, so that webcam will be embedded on certain part of it. So if I click on the record button, my webcam is not visible. Sir, Oh, it is used in WebEx. Yes. It is being used in the WebEx. So what I can do is I will stop sharing my stop video from the WebEx. Okay. Then I'll do once again. Click on the orange color arrow, microphone and webcam. Click the record button. Can you see me on the screens now? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. So this is basically, so you can create a simple and effective videos. Now you can see in the middle, once I selected the video of the teacher was embedded there in the middle and on the right down corner. And आपके सामने दो options are. One is an entire screen. Second one is window. Okay. Since I want myself to be embedded, so I will take the entire screen. So बीच वाले में एक बार click करें. When I click on the middle of this one, then you can see the share button has been activated. The share button has been activated. When you click the share button, so whatever you speak, whatever you annotate, whatever your gestures and postures, everything will be recorded. And the maximum is 5 minutes. They said you can go up to 6 minutes also. And how do we stop it? If you click the stop button, stop sharing, then the sharing option will be stopped. And इस दौरान क्या है कि लाइक पावर पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड करके आप जाते हो ना, इसमें भी अंदर जा सकते हैं. देखिए मैं बता के दिखाता हूँ. If I click on the share button now, friends, welcome to Digital Initiatives of Government of India. I am Professor Srinivas. And in this presentation, I will be talking about, मैं यहाँ से पेन सेलेक्ट किया देखिए, digital initiatives of Government of India and state government initiatives. Okay. Then one of the important initiative is Swayam. मैं इसको यहाँ rectangle use कर रहा हूँ. And इसके बाद स्वयं प्रभा, National Digital Library, EPG पाठशाला, and of course मैं कभी कभार ये emojis भी use करना चाहता तो emojis भी use कर लूँगा मैं. Wherever I want to keep it this one. I want to keep this like this. आप बहुत कुछ कर सकते हो. Finally, I click on the stop sharing button. Once I click on the stop sharing button, you can see मुझे सुनाई दे रहा है कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ. You see? Now मैंने जो हाईलाइट किया था वो चीज आ रहा है. Then मैं पेन को क्लियर करके देन मैंने इसको ओरिएंटेशन चेंज करके रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था मैंने पेन की जगह. राइट. एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इन दिस केस इज, चलिए ये तो वीडियो ऐसे मैं इसको रोक देता हूँ वीडियो को. द वीडियो वाज स्टॉप. नाउ यू कैन सी दैट सर मुझे पता कैसे चलता है कि किसका वीडियो है. देखिए यहाँ एक ऊपर लिख रहा है अनटाइटल्ड. Here you can write down the name of the video. For example, I can say Nagpur. लिख दिया मैंने. Okay, the name of the video is Nagpur. Now you can see it on the right side. Yeah, you can see there are three important options. One is copy share link. Instantly, if you want to share, because this file has been put into your Google Drive, if you want to share instantly with the people, you can do it. नहीं सर मैं इसको ये नहीं करना चाहता. I want to export this video. Right down corner में देखिएगा. You can download this video, then upload into the YouTube. Two steps. No. If you want to, I want to directly upload it to YouTube, you can use this. This is step number 2. But what is more important to me, this one, the central portion. क्या लिख रखा है? What is the written here? Which one I am highlighting? Interactive questions. Interactive questions. If you click on this interactive questions, you see what happens. This will be taking you to start my video.
This will be taking you to a screen of, the name of the screen is interactive questions. Here actually I can put the questions, I can save the questions, I can share the questions, also I can see the responses also. Quickly ये काम करेंगे. ये देखिए, what is the total duration of this video? 0.56 seconds. 56 seconds. Yeah. 53 seconds. अब इसमें देखिएगा, you can put 2 or 3 levels of questions also. So what you can do is click on the add questions. Please try to understand, this is an activity, Nardi. This is only to review the content which has been created, which has been covered by the students. So you want to review this we are going to create a reflection spot here. Sorry, sir. Can you show us from where you have added the question? Madam, I have not added. So below, madam, इसी screen पे, इसी screen पे देखिए मैडम, एक सेकंड, मैडम इसमें देखिए लास्ट में नीचे आ रहा है ना ऐड क्वेश्चन. ओके ओके ओके, थैंक यू इसमें सर. एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा. ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्वेश्चन के यहाँ लिख दीजिएगा व्हाट इज स्वयं, ये मेरा सवाल है. एंड ये कितने टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि 56 मिनट का स्लाइड है, 56 मिनट का वीडियो है, ऑलमोस्ट 20 मिनट तक, 20 सेकंड तक मैं स्वयं के बारे में बोल चुका हूं. आई वांट टू सी दैट कितने अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को है, इसलिए 25वें मिनट में आई एम गोइंग टू पुट ए क्वेश्चन ओवर देयर. सो यहां मैं लिख देता हूं आंसर 1, सॉरी इसको लिखता हूं आंसर 1. आपको लिखना होता है एक्चुअली आंसर. And very importantly, what is important is this should support the critical thinking of the students. Answer 3, answer 4, 4 आंसर आपने बनाया. इसमें से आंसर 2 मेरे लिए करेक्ट है और उसके टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर दीजिए. इट बिकेम ए ओके. मैंने क्या किया था, ऐड क्वेश्चंस के वाले लिंक के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद इस वाली स्क्रीन आ गई. देन मैंने क्वेश्चन टाइप किया था and then इसका टाइम दे रखा है, what time it is going to be. Then 4 options दिया था and these 4 options are going to be is part of the 24-second video. He has gone through that. This is very important. उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा. So you see the reflection spot has been created here. अब ये स्टूडेंट्स तक कैसे जाएगा, स्टूडेंट्स के पास जाने के बाद उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, दीज आर द एडिशनल स्टेप्स. स्टूडेंट्स के पास कैसे जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर सबसे ऊपर क्या लिख रखा है, शेयर. जस्ट क्लिक ऑन द शेयर बटन. व्हेन यू क्लिक ऑन द शेयर बटन आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रहे हैं. वन इज कॉपी वॉच पेज लिंक, द सेकंड वन इज शेयर टू क्लासरूम. So one of the easiest method is copy watch page link. Click this. Okay. And right now you are in the, so I'm sharing the same in the chat box. This is only a sample. Now I request all of you open that and take the test. Let's see that how many of you will be taking the test. Open that link which I shared with you. And it may be asking you to identify yourself with the Gmail account. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yeah. Just take the test and open that video and take the test. Tanvin,
Ashrafi has taken the test. Yes, sir. Yes, sir. No, madam, no problem. No problem. आप कर लीजिएगा. इंशाल्लाह सही कर रहे हैं. Pallavi Giri took the test. सर वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज स्वयं. अरे तो सर उसके वही मैं कह रहा हूँ वो आप उसको just take this one as an example. ओके Girish ji का I have submitted it. yeah, Rajesh has taken a test. Girish, Sumit has taken the test. It is coming on your screens. आप देख लीजिएगा. Yes, sir. I think that's how you can use this kind of a software. Only 6 people took the test. What about 14? Remaining 14. Kanchan Boyar has taken a test. Of course, it may be wrong, it may be right. Don't worry about that. This is not assessment, sir. This is on, and this is how I used to monitor my students. So before going to the face-to-face class, these kind of activities will be giving a lot of clarity to me. How many students taken the test? How many students are using this option to do the needful? I want every one of you should take. How many took the test? Only 8. Dr. Vilas, Vaishali, they took a test. Yes. Pallavi Giri has taken. Good. Revati Bangde. Good. I think this is how this process is to be done. This is the way this video. Now the next question is, sir, YouTube में कैसे जाएगा? That is the very important next question many people used to ask me. Sir, ये YouTube में तो ये video कैसे जाता है? Okay. So very simple है. This is very simple process, and you had to go back to the questions. You had to go back to this video. यही video है आपका. This is the video. And the procedure, go back to the main video. Okay. So the simple logic is YouTube में upload करने के procedure बताता हूँ. उसके बाद then I will give you some time for the practice also. On the right down corner, you can see there is an original video file. You can see there is an option called export video. Just click on this. And there are 2 different ways this video can be uploaded into the YouTube. Number 1, if you are already having a link, मतलब YouTube का जो channel है, सीधा आप इसको use कर सकते हो, export to YouTube. नहीं सर मेरे पास channel नहीं है, क्या करना है? कुछ नहीं करना. First option is click on the download the file. ये अभी जो आपने जो फाइल बनाया, ये फाइल जो है सीधा आपके डेस्कटॉप में, मैं इसका नाम नागपुर दिया था, ये फाइल डाउनलोड हो गई. देखिए इसमें नागपुर WBM के नाम पे ये फाइल डाउनलोड हो गई. नाउ हाउ टू अपलोड दिस फाइल? उसके लिए कुछ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल go to your gmail.com. The procedure to upload the file created by the Screencastify without the interactivity. Understand carefully. Okay. Step number 1. First of all, download the file into the local computer. Step number 2, open your Gmail account. Step number 3, click on this 9 dots. Step number 4, click on YouTube. If you have
if you have your own channel, straight away आप ऊपर देखिए एक वेबकैम जैसा ऑप्शन आ रहा है, प्लस साइन वाली क्रिएट वाली ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो. इफ यू डू नॉट हैव ऑल दिस थिंग्स, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू क्लिक हियर, आपका चैनल नहीं है, वो आपसे प्रॉम्प्ट करेगा, दिस इज नॉट अवेलेबल करके. ओके, यू जस्ट क्रिएट ए चैनल, जस्ट पुट ए नेम, दैट्स ऑल. ओके, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, हाउ टू create a channel and also on. Then process is click on upload video. Click on upload video. Then select the files. अभी हमने जो अपलोड जो डाउनलोड जो किया था नागपुर नाम का, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा. You see now the file is getting uploaded. You had to give the title. So demonstration. Okay, अब देखिए आपका लिंक आ गया इधर ऑलरेडी. Just copy the link. Just copy the video link. Then simply go next. Next. बाकी चीज बाद में भी देख सकते हो आप. Next. And whether you want to make the see, there are 3 important privacy options in YouTube. Public means everybody can see, everybody can search. Unlisted means जिसके पास ये वीडियो लिंक है वही वॉच करेगा. प्राइवेट मीन्स आप जिसके साथ शेयर करते हो वही एक्सेस करेगा. ओके, लेट्स मेक इट पब्लिक. देन सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश. ये वीडियो चलता जा रहा है. ओके, फाइनली इसको क्लोज कर दीजिएगा. राइट, नाउ द क्वेश्चन इज because this is my okay. Now how to save this video link. देखिए URL में जाके सिंपली आपने जो बनाया वीडियो, दिस इज योर ओन वीडियो, एंड इंटरएक्टिव वीडियो का लिंक जो ऑलरेडी मैंने आपको अपने चैट बॉक्स में दिया था, that has to be copied here. And what is important is remarks. This is how a simple tool called Screencastify is going to be used for एक second. Something is coming on my screen. What to do? Stop sharing. How can I stop it? I think it's not coming on my screen. How to exit this one whiteboard, Preeti? Okay. Fine. So what happened now? In the nutshell, let me just I'll give you another 5 minutes time to even to practice it. Also later you can do that. So in the nutshell, let me try to. Can we see the faces of the participant in the last 5 minutes also? Sir, I'm using desktop and Okay, no problem, madam. I think if it is not working, I don't mind. The voice is breaking. That's why I'm not using camera. Okay, madam. Not a problem. Just a minute. So what I've been trying to say, let me summarize where what are the things we have covered and what is the need of the hour. And one thing which is very important, whatever I have told, content creation part, content searching part, and content this thing has to be submitted to the organizers in a PPT form with a screenshots. That's very important. And
what is the need? What is the outcome which we are expecting at the end of the session? Is we need to prepare for the blended mode of teaching. Mrs. Shiksha Pranali is the need of the hour. अभी पूरा हफ्ते भर भी यूनिवर्सिटी चले, कॉलेजेस चले, महीने भर भी चले, सिर्फ आपके जो लेक्चरिंग से, आपको क्लासरूम में नोट्स देने से, it is not going to be over. So this kind of environment will facilitate the learning of the learners before the classroom and after the classroom. And it has got two advantages. Learner can learn on their own pace, own space and own time. इन सारी चीजों को करने के लिए एक मात्र जो important part है, we as a teachers wants to make the process of learning impactful, engaging, interesting and challenging. तो ये impactful बनाने में, engaging बनाने में, interesting बनाने में, challenging बनाने में टेक्नोलॉजी का रोल कहां तक सीमित है? आपने भी एक चीज देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान एंड डिजाइन. मैंने टेक्नोलॉजी से शुरू नहीं किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट. टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी, गूगल ड्राइव हो, अपलोडिंग इनटू द यूट्यूब हो, सर्चिंग फ्रॉम द यूट्यूब हो, पुटिंग द फिल्टर्स हो, ड्राइव से सर्च कैसे करना है, तो छोटे छोटे चीज ये यहाँ शुरू, हम सब लोग ऐसा ही शुरू किया था. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज you must be a practitioner first. If you practice and you preach, your class will be totally different. और सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस मैटर्स. टीचिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी है और ऑनलाइन के लिए और ज्यादा जरूरी है. ऑनलाइन में पता है क्या होता है कि एवरीबडी इज वॉचिंग अस सर. आप समझ रहे हो, सिर्फ 20 ही लोग वॉच कर रहे हैं. देयर आर मेनी पीपल आर वॉचिंग अस, especially ministries, especially your own state governments, especially your principal also can watch. But what is important is we want to have an outcome. We want to have a quality teaching learning process, teaching learning assessment also. At the same time, we want to have a trained teacher, passionate teacher, a teacher with lot of patience and teacher with lot of perseverance is required. Chalta hai is not at all acceptable. Can we send our children to a school or college where ठीक है, हो जाता है? No. आप पीटीएम में देखिए, पता नहीं आपके यहाँ होता नहीं होता. हमारे दिल्ली में तो पीटीएम में तो मारामारी होती है, हाथापाई हो जाता है. Every parent is fighting with teachers. No, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. So why don't we expect the same thing in higher education also? Let's make a beginning. एक चीज ध्यान रखिए, this is my almost my 1500 session on the same topic. अगले 5 साल तक मैं यही पढ़ाऊंगा. And you may be thinking that, sir, why only sir is teaching, talking about only one topic? Because that much gap is there. Next time you would tell, sir, we have already implemented. और मुझे contact कर लीजिएगा. So I will put you into next level. But what is important is you must be a torch bearer in your institution. ये मत देखना कौन आएगा, कौन देखेगा, कौन पढ़ाएगा. We all join the teaching profession by choice. It is our job to make the process quality. Innovative कर लो, quality के साथ पढ़ाओ, and try to improve. Improvement एक दिन में नहीं आता है, मेरा भी नहीं आया ऐसा. Even for this class also, I prepared for 1 hour. ये मैं तो आंखें बंद करके भी पढ़ाता हूँ. But फिर भी, have you ever seen that I switched off my webcam? The point is that I feel it's a privilege to address people like you. And कोई बाहर वाला आके नहीं सुधरेगा हमारे सिस्टम को. We the people, we the teachers. And just do your best. ये मत देखना कि मैडम तो कर रही है, प्रोफेसर कंचन तो ज्यादा कर रहे हैं, प्रोफेसर रेवती तो नहीं कर रहे. ऐसा कुछ नहीं है. Everybody is a diamond. Everybody is the best. Otherwise we cannot be a teacher.
And always try to remember the 3 golden words of Kalam Saab. Fail is first attempt in learning, and effort never dies, no next opportunity. So the attitude is more important to build. And आप अपने लिए करते रहो. बहुत सारे लोगों को गूगल ड्राइव नहीं आते, कोई बात नहीं, आपको आता है तो समझा दो. And let's get associated in the WhatsApp group. मैडम ने जो ग्रुप बनाया, let's continue. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और उसके अंदर नॉनसेंस पोस्ट करेंगे. हम पढ़ते नहीं है, दूसरों से पढ़वाते हैं. What is this nonsense? Why should we celebrate death days and birthdays there? No, that's not meant for that. Let's focus on 4 important aspects: learning, unlearning, relearning, and collaborative learning. मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स आर गुड, नो प्रॉब्लम, बट जिस तरीके के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स मैडम हैज क्रिएटेड, मैं भी तकरीबन 950 व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर हूँ आज के तारीख 950. मेरे ग्रुप में गुड मॉर्निंग नहीं आता है, मैं अलो नहीं करता. हाँ, यू कैन सेंड ए गुड मॉर्निंग टू मी डायरेक्टली. मैडम कह सकती है सर गुड मॉर्निंग, मैं भी कहता हूँ सुप्रभात. So that's not a problem, but not in these groups. These groups are meant to share our experiences. These groups are meant to share our issues and challenges in terms of learning. Let's hope you understand this message loud and clear. And that's all I wish to say. If you have any specific question to ask, I'm happy to answer. Thank you so much, sir. Friends, if you have any query, please ask. Any question? Or your feedback about the lectures? Anyone? Yes, Tanvin ma'am, please. Thank you, sir. Thank you very much. You had a great session. And there are many things which I learned apart from being a teaching and being, you can say that, yes, I know lots of things, but I'm not well informed with the system of how to set the things for the students. And your guidance is valuable for us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. So, any more? आज का आपका होमवर्क रहेगा स्क्रीन कास्टिफाई का. कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. नहीं, स्क्रीन कास्टिफाई का रहेगा, Yes, गूगल ड्राइव का रहेगा, सर्चिंग द सीसी कंटेंट का रहेगा, जी ये सारे करने का है. जी सर. बिना इसके तो होएगा ही नहीं. Anyway, all the very best. Thank you very So much. thank you so much, sir. On behalf of HRDC Nagpur and all the participants, I extend my thanks to you, sir, for your valuable presence and such an informative session with demonstration notes, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, all of you. Have you gone through our Genome website for today's task? नाही बघितली ना, आज काय होमवर्क दिला है. देखिए, आज तो ये वाला पार्ट जो सर ने पढ़ाया है दैट वी विल डू, बट आज अगर आप Madam, some assignments are there. Yes, on assignments on some not remembering गूगल एप्लीकेशंस. आज से अपन yes. शुरू कर रहे हैं गूगल एप्लीकेशंस. उसमें से 2 एप्लीकेशंस के वीडियोस मैंने दिए हैं, गूगल डॉक्स एंड गूगल स्लाइड्स. तो जो 2 असाइनमेंट्स प्लस एक क्विज दिया है, सो दैट पार्ट यू हैव टू कंप्लीट बाय टुनाइट. और आज गूगल एप्लीकेशन जो भी दिए हैं दैट इज द प्रिलिमिनरी पार्ट, बेसिक चीज़ें वहाँ पे बताई है. कल उसका एडवांस पार्ट और उसके एडिशनल जो एडवांस है वो पढ़ाए जाएंगे अपने लाइव सेशंस में, विच विल बी डिलीवर्ड बाय डॉक्टर कुणाल गायकवाड़ सर. तो वो बेसिक नहीं पढ़ाएंगे गूगल एप्लीकेशन का, एडवांस पार्ट एंड वेरियस एड-ऑन्स इन गूगल एप्लीकेशन, दैट पार्ट विल बी कवर्ड बाय टुमारोज रिसोर्स पर्सन. तो आज आपको 2 टास्क दिए हैं गूगल एप्लीकेशंस में, गूगल डॉक्स एंड गूगल स्लाइड.
गॉट इट? अभी देखिए सर ने जो स्क्रीन कास्टिफाई पढ़ाया, अगर कुछ स्टेप्स आप लोगों की मिस हुई होगी, आई विल मेक वीडियो और पीपीटी ऑन दैट सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट रीडिंग मटेरियल एंड परफॉर्म योर स्क्रीन कास्टिफाई वीडियो क्रिएशन. विल इट बी ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं. मैडम यस. एक्सक्यूज मी मैम, यस. मैम रिपोर्ट बनाना है फिर आज? नहीं, आज का रिपोर्ट मैंने डाला है. कुछ की पॉइंट्स अगर आप टेक अवेज है आज के, मतलब मैक्सिमम तो डेमोन्स्ट्रेशन मोड में ही था, उसको अगर आप ब्रीफ में लिख सकते कि क्या क्या आज के सेशन में हुआ, तो उतना पार्ट रिपोर्ट में कवर करिए. वो डिटेल में स्टेप्स नहीं लिखी तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज हैंड ऑन सेशन. और वीडियो आज ही बना के भेजना है फिर वो स्क्रीन कास्टिफाई नहीं का? मैम, ने आज का टास्क गूगल एप्लीकेशन के ऊपर है, उसके लिए मैं सफिशिएंट टाइम दूंगी आप लोगों को, क्योंकि उसके स्टेप्स अभी रिकॉर्डिंग आपके पास आएगा, उसके बाद आप लोग परफॉर्म करेंगे. सो आई विल गिव यू कपल ऑफ डेज, इन दोज डेज यू कैन कंप्लीट. मॅडम ते डाउनलोड करून केलंय पण ते काही